on this 4th day of this ICT-based course on embedded C programming of microcontrollers. We have already had idea about the basic architecture of microcontroller, how to program 8051 in C. We have done various programs based on C programming, and yesterday we have already seen how to simulate all these projects based on Proteus software. Now, this was all about the virtual things when you're working on your laptop, but when you have to work on a real-time project, what is required? You have written your program either in a C language or in assembly language, but what is to be burned into the microcontroller is the machine language or the hex file, and for that we require a compiler. So Keel compiler is the most widely used compiler for programming 8051 in C. And today, firstly, we will see how to write a program in C in Keel program and in Keel software, and then how to create a hex file out of it. And then in this 11:30 session, we will be doing some hands-on projects on 8051 kits also, to give you an idea about how to burn these programs into the microcontroller and see their results. I hope all of you have installed Keel software at your end, and I have also emailed the zip file of Proteus software to all the coordinators. So kindly check your emails and download the Proteus software for your practice. But as of now, we are not going to use Proteus today. So Keel, if you have installed on your PCs or laptops, it is sufficient as of now. And I would suggest that as we keep on making the projects, please you also practice on your PCs to write your program in Keel, because there are various steps involved, and the more you practice, the more you will become familiar with the Keel environment. Now, so there is an icon. There is an icon on your desktop with this Keel Microvision 4, as you can see from here. This is the icon for Keel. So when you double click it, this kind of window will open. This is known as IDE, Integrated Development Environment of Keel. And initially, when you install it for the first time and open it, then hello program, which is by default, will open. So go to the project and close that project, because we have to make a new one. So I've already closed it. That's why this blank window has come. Now, the first step is go to project and new Microvision project. Now it will ask you a destination where you want to make your project. So it is always advisable to make one folder wherein you will be making your project. Otherwise, there are various linking object files, etc., which will be created, and it will be all spread, and you will not be able to make out which file is which. So it's always advisable to firstly make a new folder. In my case, I'm going to change the destination. Deepika, इसमें desktop नहीं आता है. कुछ वो है क्या? हो गया? कहाँ से? अच्छा, नहीं वो लेफ्ट साइड पे भी एक्चुअली आना चाहिए ना. चलो, anyways, I'll make it somewhere else. This desktop is always busy. C में space है? नहीं है ना यहाँ पे लेफ्ट में. कहाँ? ये नहीं है, इसमें वही बता रही हूँ, क्योंकि आता है तो अदरवाइज वो लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल हो जाता है. कोई बात नहीं, मैं सी में कर लेती हूँ.
So I'll suggest all of you, there's some problem with this laptop which is not showing the desktop. Otherwise, you can make it in desktop. I'm creating a new folder in C, and I'll give it a name. Let's say programs. So I will open it, and the name of the project which you want to create, give it a name. Let's say I will be making the first program I will be making is of LED. So LED, and then save. Next is it will ask us is the controller. It is very important to choose the right controller at this stage, because in my case I'll be using Philips. So Philips is basically, when you want to see, it will go in NXP folder, and in NXP the controller, whatever controller you have at your end, you can choose that. I am having this one, Philips 89CRD 51RD2BN. Okay. Then it will ask you copy standard 8051 code. So you can say yes or no, it doesn't matter. I say yes. So can you now see on the left hand side, this is the project window. It was empty earlier, but now a target has been created. And this is the window wherein you will be writing your program. This window on the bottom, it is your output window, and these are all the toolbars. So in order to write a program, initially this is disabled. This is gray building. So this is disabled. I go to file, or below that there is an icon called new. So now I'm ready to write my program. Now, as I told you that day, that it is always better that if we write our comments also. So what I'll do is, because here a size is a bit small, and you will not be able to see the size, so I'll write the same program in Word, and then I'll copy it so that you can easily see the program as well. P89C51RD2XX. So firstly, I will write my header file. This is our main program. I think this is very clear to us. We've already discussed this program earlier, so I need not explain this again. It is just doing that P1 alternate LEDs are glowing. It is toggling the pins of port P1, and what I've done is I've given a delay in between by using a for loop, and unsigned int x is the data type which I've taken. Deepika, which center is that जहाँ पे वो fan दिख रहा है? नहीं, लास्ट ETV से आगे वाला.
Mulana Center, please focus the camera on the participants. Thank you. So after writing the program, I just copy it and I paste it here. Okay. So the next step is, once we have written our program, the next step is to save the program. So again, I'll go to File and write Save As. So by default, it will use the same folder which you had created for making your program. So I'll give it a name LED. Now at this stage, it is very important to give the right extension. If you're writing your program in C, you have to give it an extension .c. If you're writing your program in assembly, you have to give it an extension .asm. So because we are writing in C, I will say led.c and then save. So can you find any difference now? Yes, can you find any difference in the program? आप लोगों को कोई डिफरेंस लग रहा है? So if you can see, सेव करने के बाद क्या हो गया, हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया. So this is another very good feature of Keel. इसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जैसे आपके जो कमेंट्स हैं उनका कलर जो है वो ग्रीनिश ब्लू है, टर्कोइज ब्लू, और आपके जो डेटा है वो पर्पल कलर के हैं, और जो आपकी कमांड्स हैं वो आपकी ब्लैक कलर की हैं. सो सपोज अगर हम यहाँ पे कहीं पे कुछ ठीक से नहीं लिखते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम बाकी सारे जो है वो ब्लैक बोल्ड है, जो हमने कमांड रॉन्ग लिखी थी वो बोल्ड नहीं है. सो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि देयर इज सम मिस्टेक इन माय प्रोग्राम, so you can correct it there itself. Okay, so after saving our program in the desired destination, the next step, very important step which is to be performed, is you have to go to target 1 and then go to source group. In the source group, click right and then say add files to group source group 1. So automatically वो वाला folder खुल जाएगा जो आपने बनाया था, and it is showing you also LED here. So just add this, add, and then close. So on the left side, if we open this source group, we can see that there is our file led.c. This step is very important. If you do not perform this operation, if you do not add your file C file to your source group, then your execution will not take place, or your translation will not take place. So next step is to find whether we have written our program error free or not. So for that we go here. This is the icon, the first one, translate. So this is for compiling. So our program is without any errors until you get this 0 error. जब तक आपका ये 0 error नहीं आएगा तब तक आपकी hex file create ही नहीं करनी उसने. So this is to check whether your program is corrected or not. Let's say by this stage I had done some mistake in my program and I was not able to find it out. Then here I can find, for example, I had written by mistake the for as FORE and I couldn't see that it was not bold, and when I compile it, it is showing 3 errors here. It is, apart from that, it also shows you where the errors are. It has automatically created lines for each of your instruction, and it is showing you that in the 11th line there is an error, and what is the error? That is also it is showing the missing function prototype. It expects you to write for there, but you have not written for, so that is why it is telling you that there are various errors, like syntax error also. All the errors are there.
So, and in case you want to see also where it is, then it is pointing you also with the help of that arrow. This arrow you can see here. So there, that is, we can know that yes, this is the place wherein we have done some mistake. So I just correct it and I run it again. So the next step is to create the hex file. For that, I go to project. In the project, go to options for target. एंड ऑप्शन फॉर टारगेट में पहले तो आप अपना क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो आपने अपने हार्डवेयर में यूज करना है, सेम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे कीजिए. हमारे हार्डवेयर में इट इज 11.0592 मेगाहर्ट्ज. एंड देन गो टू आउटपुट. नाउ the hex file name, by default it is given the same name as that of the C file, but you can give it a separate name also in case, because many files will be created there, object file, link file, etc. In case you want to distinguish this file from your other files, because ultimately we have to burn this hex file into our controller, so you can give it some other name also in order to see that which one is the different. But otherwise, in this case, I just keep it LED. And this icon is unchecked right now, so I will just check it, create hex file, and then say OK. Okay. So next step is the middle one, that is build target file. So I just click this for creating the hex file. So it is creating hex file, and it has created also with 0 errors and 0 warnings. So now let us see our hex file which is created by the compiler. So I'll go to the destination. क्या नाम दिया था हमने फोल्डर? Programs. Okay. So this is the folder which I had created, programs. Hello. Yes, sir. Good morning, ma'am. Ma'am, can you please repeat last few steps, because we skipped it in between? Let me first complete this and then I'll again repeat. Okay, ma'am. So we want to see the hex file. As you can see from here, the hex file is with the extension .hex here. So just click it. The first time it will ask you which program you want to use. So I will use select a program, and in the notepad I will see. So this is our. See, if you had to write the same program in machine language, आपको ये program ऐसे लिखना पड़ता in machine language. But thanks to our high level language and thanks to our compiler C, you could write the program very easily according to the language which you can program easily, and compiler has automatically converted it into the hex file. एंड अर्लियर केसेस में क्या होता था, हमारे पास लुकअप टेबल्स होते थे, जैसे आप लोगों ने 8086 जिन्होंने किया होगा, तो उसमें क्या था कि आप अपना इंस्ट्रक्शंस लिखते थे असेंबली लैंग्वेज में, और फिर हर इंस्ट्रक्शन के लिए हेक्स फाइल का जो ऑपकोड है वो उसके लुकअप टेबल में दिया होता था, और आपको वो मैनुअली एंटर करना पड़ता था अपने किट में. बट बिकॉज ऑफ दीज Keel compilers and other compilers, the things have become so simple that you write your program in the PC and there itself you compile and then you create your hex file. Now this hex file can be burnt into your controller with the help of some programmer, or in case you have some in-system programming, flash programming, you can directly burn into your controller without the need of taking it out and then burning it. Now I again repeat the steps in case some of you have missed it. So you want me to repeat it from the beginning? Should I do it from the start? देखना पड़ेगा 0x8090A0B0. हाँ. Hello. Yes, sir. Ma'am, can you just quickly repeat the process from the beginning? Okay, I'll do that. Thank you, ma'am.
So the first is you go to this icon Keel Microvision 4. This kind of window will open. First step is go to project, new Microvision project. It will ask you the destination. I'll give it a name LED1 and then save. Then it will ask you which controller do you want, Atmel or whatever controller you're working on, you can choose it. I am using Philips. So Philips controller will be found in NXP. But in your case, you have to see which controller you're working on. Accordingly, you will choose that. It is 89V51RD2B. It is V. नहीं यहाँ पे आपको करना पड़ेगा चूज कुछ लाइब्रेरीज जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं कंपाइलर के लिए सो it will say you can, let's say in this case I say no. So as you can see from here on the left side a target has been created here. So this target means that your project has been created. This is the first step and very important. Next step is you want to write your program in this area. It is disabled right now. So I'll go to file and new and here I'll write my program. I've written my program to glow the LEDs alternatively, and then the next step and very important step is to save this program. So next step is to save this program and I go to file and save as. It is very important that this stage you give it a extension .c or .asm, whichever programming you are writing on. I'm using C, so it will be LED1.c and then save. So as you can see here that the color has changed. That increases the readability as well as you can tell that if you have written all the things in proper way, like all your commands, they are in a different color, your instructions, they are in a different color, data is in different color, it is purplish color, etc. So after saving your program, very important step is to go to the target, go to source group 1 and right click it and say add files to group source group 1. Then it is showing you the various C files. In this case we had created it with the name LED1. So I just select it, add and then close. So as you can see here on the left side in the project window, LED1.c file has been added. Until and unless you don't add this C file to the source group 1, your compilation will not take place. So next step is to compile it. For that we have this icon translate. So we have got in the output window 0 error. So until and unless you get a 0 error, your hex file will not be created. So first step is to make your program error free. And then in order to create the hex file, go to project. In the project, go to options for target. Here select the frequency, whichever frequency you will be using in your project, and then third is output. Go to output, and right now create hex file is disabled, so just check it, create hex file and then say OK. So after we do this, go to this second icon which says build target. So when you say build target, in the output window it is saying creating hex file LED1 with 0 error. So it has already created your hex file, and in case you want to see your hex file, just go to the destination wherein or the folder wherein you had created your hex file. So this is the hex file. Is it clear? Does anyone have any doubts?
आप लोगों का बन गया? Yes, ma'am. Till now it's clear. Okay, and please all of you at your end practice this on the keel. Then we will move next because Hello, ma'am. yes sir, I'm from NIT. yes sir, Ma'am, yesterday we were selecting the Atmel processor AT89C51. yes sir. So in that, this header file was not working reg51.h. We have to add the AT89x51.h. It depends upon your controller. वैसे RAG51 तो C51 family के साथ it works. It shouldn't happen, but sometimes I will tell you. Sometimes if your this is not taking any header file, there is one another option also by taking SFR, special What, function, ma'am? special function register SFR. Actually, what is happening is that in your header file, all the addresses of all the ports, etc., they are already contained in your header file itself. But in case you are not using this hash include reg51.h, what you can do it, instead of that, you can use the data type SFR. SFR stands for Special Function Register. And in that, Okay. you can say SFR P1 is equal to or whatever name you want to give it, this is equal to the address of that particular. For example, if you're using port 0, then it will be equal to 0x80. In case you're using port 1, 0x90. So use it. It will not create No, any. are there different types of syntax for writing the port number and their pins, like P1 equal to the power 1 and P1 underscore 1? I have seen one example. It depends upon the compiler. Some It depends compilers, on. they take underscore also. Okay, okay. बट यहाँ पे आप ट्राई करके देखिए कि कील यूज करता है कि नहीं करता, बट कुछ कंपाइलर्स जो है वो अंडरस्कोर को भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली सी में जो है वो कैप ही यूज होती है. Okay. Thank you, ma'am. आप लोगों का बनना बना लिया हेक्स फाइल. अदर सेंटर्स, हैव ऑल ऑफ यू created the hex file, or did you find any error, or did you find any problem? Because then only I'll move to the next program. No, ma'am, the things are clear. Things are clear. Others also? Um, मैम क्या ये जो आईईडी है, क्या इसका फॉन्ट बड़ा हो सकता है या ये इतना ही रहेगा बाय डिफॉल्ट? इसमें हम वो यूज कर सकते हैं मैग्नीफायर, जी बट नहीं, एक्चुअली आप जो वर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं ना, वो चीज क्लियर है. इसीलिए मैं वर्ड में लिख रही हूँ. बिल्कुल ठीक है मैम. वो वर्ड में लिखने का मेरा पर्पस यही है कि मेन जी प्रोग्राम जो है आप वर्ड में देख लें, एंड देन आई विल कॉपी इट हियर, बिकॉज बाकी के स्टेप्स तो सारे कॉमन ही हैं. जी 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 ठीक है मैम, थैंक्स. लेट्स डू सम मोर प्रोग्राम्स. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग, हमने जितने भी सी के प्रोग्राम्स क्लास में डिस्कस किए थे, आप वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कील के अंदर रन करके देखिएगा. एलसीडी प्रोग्राम कर लेते हैं. एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप आई एम नॉट हैविंग प्रोटियस. मेरे अपने पर्सनल लैपटॉप में है, बट उसके कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रही हैं. अदरवाइज हम यही सेम प्रॉब्लम को प्रोटियस में भी रन करके देख सकते हैं, कि क्योंकि आपने हेक्स फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर ही ली है, तो एलईडीज जो है वो रियल टाइम में कैसे ग्लो करेंगी ऑल्टरनेटिवली. एंड हैव यू गॉट द प्रोटियस फाइल्स आल्सो, all the coordinators? I'd sent you email in the morning. Okay, let us do some LCD program also.
So I'm taking this example wherein my control pins of LCD are connected to port pin P2.0, 2.1, etc. So this program is clear to you already, no? This S bit RS, we have defined it to be R2.0, enable is 2.1. And then this is our instruction यानी कि command write का आपका program है ये, जिसमें RS की value is to be given 0 and enable is given high to low. And then data, the only difference is in this case RS will be 1. And then your main program, देखिए डिले का सब रूटीन है बीच में. अच्छा, अगर एक और चीज है सी के अंदर, इन केस आप अपना सब रूटीन मेन प्रोग्राम से पहले लिख देते हैं ना, देन यू डोंट हैव टू डू दैट सेपरेटली. लाइक yesterday we were doing delay program and that we were defining it before, like void ms delay void, and then later on when we used it delay, we wrote the program. Like in this case, before the main program we have used this void delay, so that is why we don't have to declare it here after the globally. Then your main program, this is for initialization of the LCD, 2 lines, 16 character, 5/7 matrix, and then instruction write, and then similarly 0E, 01 for clear, cursor blinking, etc. Shift to the right, and then this represents that your instruction should be on the 4th position of the first line, and then these characters are copied into the LCD. They are to be written into the LCD. So initially we have to close the existing project first before we make a new project. So go to project, close project, then project, new Microvision project. Let's say I'll give it a name, LCD, save, again the controller name, so target has been created. Written my code here. Next step is to save it. Save as LCD. Very important to give it an extension. .c. Go to target, source group 1, add files, LCD, add, close. So you can check also by going to source group 1 and our file has been added here. Next step is to check whether our program is error free. So it is showing 0 error. Oh. So next step is to create a hex file. Go to project, options, output, create hex file, then say OK. So this is how the hex file is created, which will be burnt into the controller. इसके जो next हमारा session रहेगा ना, उसमें हम ये सारे programs जो हम बना रहे हैं, उनको हम
माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअल बर्न करके इनका आउटपुट चेक करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्स फाइल बनानी कैसे है। So see, this is our, now imagine you people are, we are so lucky कि हमें C में काम करने को मिल रहा है। जो इनिशियल प्रोग्रामर्स थे, they used to write their program in this, like this, because ultimately the controller understands only machine language, na? It doesn't understand any other language, but it is for our own convenience that we are writing a program in C and then with the help of a compiler we are converting into hex file. सबके बन गए या कोई डाउट दिक्कत आ रही है किसी को? आप लोग ट्राई कीजिए अपना प्रोग्राम। कल करवाया था ना, एलसीडी वाला प्रोग्राम करवाया तो था, लिखा नहीं था? सब सेंटर्स के पास प्रोग्राम है एलसीडी का? डू यू हैव द प्रोग्राम फॉर एलसीडी? बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको ही प्रोग्राम को जब बनाएंगे तो तभी हेक्स फाइल बनाए रहे ना। जब हम एक्चुअल करते हैं ना किसी प्रोग्राम को, तब हमें पता चलती है क्या क्या एरर्स हमारी आ सकती हैं। लाइक यस्टरडे व्हेन आई वाज राइटिंग दिस प्रोग्राम, तो एक एरर आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या है वो। एक सिंपल कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं लगाई थी। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू हैव टू मेक योर प्रोग्राम एरर फ्री। सी प्रोग्रामिंग इज जस्ट लॉजिक। अगर आपको लॉजिक डेवलप करना आ गया ना, सिंटेक्स आपको ऑलरेडी पता चली गया है किस तरह से यूज करना है, सो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोग्राम इजीली राइट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है कि हम नेक्स्ट स्टेप करें, नेक्स्ट प्रोग्राम करें, और आर यू स्टिल ट्राइंग? हेलो मैम, सर वो स्क्रीन मैम, दिस इज फ्रॉम MIT मेरठ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, आई हैव वन डाउट। while using the skill software, can't we make the same project, same program in the same project? वी कैन डू दैट, कर सकते हैं। In that case, while debugging, hex file will be created, then which programs hex file will be created? हेक्स फाइल आप नाम देते हैं ना उस समय उसको। Like ma'am, suppose I have two .c files, led.c and lcd.c. Then which parameter will decide that hex file will be created was associated to lcd.c or led.c? यहाँ पे आप कह रहे हैं इधर इसी प्रोजेक्ट के अंदर? सर स्क्रीन दिखाना। हाँ मैम, इसमें इसी प्रोजेक्ट के अंदर यू शुड नॉट डू दैट। ओके। क्योंकि वही दिक्कत आती है कि जैसे सपोज, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, लेट्स से करके ही देख लेते हैं। ये राइट क्लिक करके अब एक और फाइल ऐड करते हैं इसमें। यस मैम, अनदर प्रोग्राम हाँ, विद .c एक्सटेंशन। लेट्स सी व्हिच काइंड ऑफ एरर डज इट शो। क्लोज। मैम एरर नहीं आती है। एरर तो नहीं आती है, लेकिन वही बात है कि आप जाएंगे ना, प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जैसे, हाँ बट पता नहीं चलता। तो आप ऑप्शंस के अंदर जब आउटपुट कर रहे हैं, तो हाउ, व्हिच वन डू यू नो
What? एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं अभी करती हूँ। वही तो पूछना है, वही तो पूछना है क्या? आप उसका नाम चेंज कर दीजिए ना। जैसे इस केस में क्या है कि वो पहले उसने बाय डिफॉल्ट ही एलसीडी लिया हुआ था। अब मैंने क्या किया, जब मैंने अपना एलईडी वाला प्रोग्राम ओपन किया तो मैंने वहां पे जाके अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना जो आपके यहाँ पे हेक्स हाँ फाइल, हाँ इसका हाँ। नाम आप चेंज कर दीजिए। यही मैं बता रही थी कि कैसे पता चलेगा हमारी फाइल कौन सी है। हमारी दो मैम फाइल। उससे जो जो हेक्स फाइल बनती है बस उसका नाम चेंज होता है, हम्म। बट बट वो किसकी बनी ये कैसे हम वो मैं करेंगे? वही बता रही हूँ, इस केस में ये एरर दिखा रहा है, ये देखिए, मल्टीपल पब्लिक डेफिनेशंस, प्रोग्राम टारगेट नॉट क्रिएटेड। मल्टीपल नीचे वो देखिए ना, ये जो एरर आ रहा है इसमें मल्टीपल विजिबल नहीं है मैम पब्लिक। यहाँ से, आप प्लीज रीड कर देंगे एक बार? हाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो ये जब हमने इसको लिंक किया ना, तब ये हाँ। एरर दे रहा है, मल्टीपल पब्लिक डेफिनेशंस एरर, टारगेट इज नॉट क्रिएटेड। इट इज इन लाइन। नो देयर इज मैम नो प्लीज। लाइन, एक्चुअली देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, बट लिंकिंग में जब आपने लिंक किया ना, हाँ जैसे दो हाँ हाँ। प्रोग्राम है ना हमारे यहाँ पे, जब हमने बिल टारगेट किया तो मैम टारगेट, ऐसा हो सकता है कुछ चीज दोनों उसमें कॉमन हो शायद इस वजह से। आई हैव नेवर ट्राइड इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके ओके whenever I make a project, I always make a new project. And in this ओके। case, इसीलिए मैंने अभी आपको करके दिखाया कि ये देखिए, अगर लेट सपोज हम एक ही प्रोजेक्ट बना लिया हमने, और हाँ उसके अंदर हम दो फाइल्स ऐड कर दी मैंने सोर्स ग्रुप फाइल की, तो बेशक उनके हेक्स फाइल के नाम अलग है, लेकिन जब हम वापस गए यहाँ पे तो बिल्ड टारगेट नहीं हो रहा। यही पूछा था ना आपने। हाँ मैम बस यही पूछ रहा था मैं। थैंक यू सो मच। बाकी प्रोग्राम बन गया आप सबका, हेक्स फाइल क्रिएट हो गई उसकी एलसीडी की। यस मैम। नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट करते हैं, डीसी मोटर। डीसी मोटर की अगर हमने स्पीड कंट्रोल करनी है यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर, हाउ टू राइट अवर प्रोग्राम, और उसके बाद हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे अभी हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में। बोर्ड यूज कर लें। So I'll give you some basic idea about speed control of DC motor that will help you in writing the program. See, basically there are two pins. ठीक है, या थोड़ा क्लोज अप प्लीज। So this is our DC motor. Because the microcontroller is not able to drive this DC motor, इसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, so that is why this L298 driver IC is required. And what does it do? Basically, L298 जो होता है, you can drive two DC motors at a time. And another thing is कि इसके बैक EMF से आपका माइक्रो कंट्रोलर डैमेज ना हो जाए, उससे भी ये जो है ये प्रोटेक्शन करता है. So you always have to use a driver IC for the DC motor. So the two port pins of microcontroller will be used. Let's say we are using in this program pin 0.0 and pin 0.1. They are connected to input 1 and input 2.
Okay. Apart from this, there is one enable pin also. That also you have to connect. So either you can connect this to VCC always high, or else you can also program it with the help of You are using L298 or 293D? 298. 298. What MPS? It's 2 MPS. मतलब डिपेंड करता है ये वाला जो L298 है ये दो डीसी मोटर्स को एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता है। 3 भी also doing 3 नहीं, L298 के पिंस में भाई उसके 4 इनपुट्स हैं, तो 4 इनपुट्स में से 2 पोर्ट पिंस तो इसकी होगी। So this enable pin either you can give it a VCC, आप इसमें डायरेक्टली इसको VCC कर दो। तो अभी इस प्रोग्राम में हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। And these are the two outputs. And to drive the DC motor, we require a 12 volt DC supply. Now the logic is very simple. Logic is that suppose we want to control the speed and the direction. In this case, it is the direction control of your DC motor. Either you will rotate it clockwise or you will rotate it anti-clockwise. So suppose दोनों उस पे इसको दोनों पोर्ट पिंस पे आप सेम अगर दे देते हैं लॉजिक, then it will stop. So the logic is like that. If P 0.0 So this is a simple logic that your port pins P0.0 and 0.1 are connected to your driver IC L298. If case this is 0 and this is 1, it will rotate in clockwise direction. Then you will give both of them 1, it will stop. Then 1, 0, it will rotate anti-clockwise. And when both are 0, it will stop. So now you know the various connections. You know the connections of your motor with the port pins, and also you know that which logic is to be given. So I want you to try this problem first and then I will explain. बहुत सारी ड्राइवर आईसीज होती हैं। it can drive also sometimes. मैं वही बता रही हूँ, ड्राइवर आईसीज बहुत सारी हैं। हमारे केस में इसमें हमने 298 लिया है हमारे प्रोजेक्ट में। सो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो दो पोर्ट पिंस हैं, पोर्ट 0.0 एंड 0.1, यू हैव टू गिव देम सम नेम, और उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे एस बिट यूज करेंगे, ठीक है ना। एस बिट करके आप उनको नेम दे दीजिए, लेट्स से मोटर पिन 1 एंड मोटर पिन 2, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोग्राम के अंदर this is equal to 0, this is equal to 1, and after every time, like for example आपने जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, उसके बाद में स्टॉप करने से पहले आप एक डिले दे दीजिए, उसके बाद आप उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर डिले दे दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर डिले, एंड देन क्लॉकवाइज, एंड देन अगेन डिले। तो एक डिले का सब रूटीन लिखना पड़ेगा, एक आपको हमारे जो सारी पोर्ट पिन्स हैं उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा एस बिट में और नेम देना पड़ेगा, दैट्स इट। और आपको इसको कंटिन्यूअसली चलाना है तो while 1 कर दीजिए। So please all of you try this program. हाँ जी मैम। जी मैम, in our center we are not successful in building the hex file. We are all having the same problem of building the hex file. That is why I asked you that in case you have any problem, please let me know. Then only I'll move further. Yes, ma'am. Which problem did you face? Ma'am, we are following all the steps, but when at the last we are building the hex file, it is just showing that creating hex file and then build time elapsed and it is getting stopped.
So no more progress. Are you making all your C files in the same project, or you're making different projects every time? No, ma'am. 2-3 times we have started from the beginning itself and run the same program. No, So, no. but What also, I'm saying is, for example, initially you started with LED, and then when you wrote the ma'am, program, different projects, not the same. Yes, तो ma'am. आपने लेफ्ट साइड में जब सोर्स ग्रुप है उसमें फाइल्स ऐड की, हाँ मैम, फाइल एड्स की। तो एरर क्या दिखा रहा है? मैम एरर कुछ नहीं दिखा रहा है, नो एरर्स, बट दिखा रहा है क्रिएटिंग हेक्स फाइल फ्रॉम डैश जो हम लोग बनाए हैं, और फिर लिखा रहा है 0 एरर्स 0 वार्निंग्स एंड बिल्ड टाइम एलाप्स्ड करके 0.00.01 ऐसा करके स्टॉप हो जा रहा है। आपका फिर इसका मतलब कील ठीक से कंपो नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ, बिकॉज ऐसा तो कोई एरर आना नहीं चाहिए। आपका ओके। प्रोग्राम भी एरर फ्री है, और हाँ मैम। आपके प्रोजेक्ट में जाके हाँ जब आपने आउटपुट किया था ऑप्शंस फॉर टारगेट में, हाँ 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 आउटपुट में जाके आपने ये चेक किया था क्रिएट हेक्स फाइल हाँ की मैम, क्रिएट एक्स फाइल किए थे, वो बॉड रेट भी हम लोग चेंज कर दिए थे। बॉर्ड रेट भी चेंज कर दिए थे? हाँ मैम। वैसे बॉर्ड रेट का इस स्टेज पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बॉर्ड रेट का अल्टीमेटली आपके हाँ फाइल पे फर्क पड़ेगा, बट यहाँ पे आपका इसका मतलब कील जो है उसमें कुछ फाइल मिसिंग है जब आपने उसको इंस्टॉल किया, ओके मैम, ओके ओके। बिकॉज ठीक है अदरवाइज तो ऐसा कुछ लैप्स आप बता रहे हो, ऐसा तो कोई मैम। कंपाइलर ही तो मैम वो हेक्स फाइल हम बनाने के बाद वाला स्टेप एक बार बता देंगे प्लीज। हेक्स फाइल बनाने के बाद में आपने जो आइकन पे जाते हैं हम, हाँ मतलब वो फिर, हाँ हम लोग रन करेंगे, क्या करेंगे वो बता दीजिए। ओके, वो जो आपके डिफरेंट आइकन्स है ना, एक तो आपका सबसे पहले ट्रांसलेट आइकन था हाँ जब मैम। आप अपने हाँ हाँ प्रोग्राम हाँ के हाँ। साथ में एक आइकन है बिल्ड टारगेट, ओके। वो कर रहे हैं? हाँ मैम, वो भी कर रहे हैं, हम लोग वो भी कर दिए हैं। ये वो तो होगा ही, क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि आप लिख उसमें आ रहा है कि क्रिएटिंग हेक्स फाइल, हाँ तो हाँ हाँ। इसका मतलब आपको कील दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर कील कंपाइलर। ओके। एक मिनट, आपने जो कील इंस्टॉल किया था वो हाँ 51 के लिए किया है ना, आर्म वाला तो नहीं कर दिया था, C51 किया है ना? C51 ही मैम किया है। फिर आप उसको दोबारा इंस्टॉल करके देखिए, आपके प्रोग्राम कंपाइलर में ही कुछ इशू है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम है। ओके, अब थैंक आप यू मुझे मैम। काम कीजिए, पहले तो ये जो अभी मैंने डीसी मोटर का बताया ना आपको, ये जरा ट्राई कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। क्या? तो अदरवाइज बिट्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? जो आपने ये वाली बिट्स डिफाइन करनी है, 0 1 1 1 1 0 0 0, उसके बिना कैसे करोगे? नहीं नहीं नहीं, P1 मतलब पूरा का पूरा पोर्ट नहीं, उसके लिए एसबिट यूज करना पड़ता है।
Because 8 pages per day, 8 pages. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम जस्ट वन रिक्वेस्ट कि आप जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे कर रहे हो ना, उसका हम लोग को सॉफ्ट कॉपी आप मेल कर सकते हो हम लोग को। हाँ, मैं कर दूंगी after the class. यस मैम, श्योर श्योर, नो इश्यूज। I'll do that. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay, we'll go for the tea break as of now, and then we'll assemble back. In the meanwhile, आप लोग ये सब try कर लीजिए जो DC motor वाला है। इसके अलावा एक और program हम करेंगे, and then we'll do with the our hardware part. ठीक है? We'll go for the tea break. आप अपना ये वाला program DC motor वाला try कीजिए। Ma'am, I have one doubt. Can I? Yes. Ma'am, the same question I was asking, like making more than one C file in the project. Ma'am, I have tried it. Sir, एक मिनट mouse ना. Ma'am, I have tried it and that error was coming na. I have Hmm. changed the name of main. I would do it as a void main one void. Then that अच्छा, error is gone and I okay. have zero error, one warning. वार्निंग का कोई इशू नहीं, वार्निंग का तो चलता है। आपने क्या किया कि हर अच्छा पहले वाले के केस में जैसे एलसीडी था उसमें मेन कर दिया, एलईडी हाँ. में आपने वॉइड मेन 1 कर दिया। No, I don't try that complex program. I just write some value to P1 and then some value to P2 in two programs and just change the name of main. कहने का मतलब ये कि आपने जो दो अलग-अलग किए उसमें आपने मेन प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैम फिर वही क्वेश्चन आता है हेक्स फाइल हेक्स किसकी फाइल का बनी? आप नाम चेंज कर दीजिए ना। वो तो हाँ हमारे पास ऑप्शन होती है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग द हेक्स फाइल, तो आपके जब हाँ आप लिखते हैं ना चेक करते हैं क्रिएट हेक्स फाइल, राइट साइड में ऊपर जाके राइट में एक बॉक्स है। बाय हाँ. डिफॉल्ट वो आपका जो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिया वही ले रहा है। आप उसमें 1 2 करके लेट से नाम दे दीजिए। फर्स्ट केस आपका लेट से प्रोग्राम 1 था, तो उसमें आप हेक्स फाइल का नाम प्रोग्राम 1 दे दीजिए। दूसरी आपकी है उसको आप कुछ और नाम दे दीजिए। हेक्स फाइल का नाम तो चेंज हो जाता है। अच्छा हम्म, मैम, मैम उससे अच्छा मैम ठीक है, हम्म। ठीक है मैम, मैं थैंक आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। प्रोजेक्ट में जाइए, यू। यस. ऑप्शन फॉर टारगेट, आउटपुट, ये ऊपर दिख हम्म. रहा है नेम ऑफ एग्जीक्यूटेबल, हम्म, ये नाम चेंज कर दीजिए। दिस इज द नेम ऑफ योर हेक्स फाइल। ठीक है मैम, फिर वो पता चल जाएगा ना आपको हेक्स फाइल कौन सी किसकी है। उसके लेफ्ट में बटन दिखता है, ठीक. उसमें से तो कुछ नहीं मिला, उसमें भी दिखाता है कि कौन सी फाइल अभी ले रहे हैं। सेलेक्ट फोल्डर है, वो फोल्डर और बाय डिफॉल्ट वही रहेगा जो आपका आपने चूज किया हुआ। ठीक है, ओके।
हो गया start. Okay, welcome back. Have you tried the program? Have all the centers tried the program? It's very simple. You just have to give the logic 0 and 1. The logic I have already told you here. See, this is the program. So initially you have to define both the bits which are to be connected to the motor. So I've given them the name M1 and M2. P0.0 is given name M1 and P0.1 is given name M2. And then there is one delay. Deliberately I have used it like suppose you want to give delay of different kind in each type. For example, if you want that it should rotate clockwise for 300 milliseconds and anti-clockwise for 1000 milliseconds, so that is why you can use like this. Otherwise you can give a delay here itself if you want constant it for everything. So this is just for delay. And now coming to the main program. So this is to rotate motor clockwise. It's a DC motor, not अभी तो DC explain किया है ना. उसके बाद में हमने डिले दे दिया 300 मिलीसेकंड्स का, फिर उसके बाद हमने उसको स्टॉप कर दिया. This logic is to rotate anti-clockwise. And then again stop. That's it. So this is the program, and when we run it, 0 error in project, options, output. So this is how we write a program for the direction control of the DC motor. Any doubts? Any doubts in the program? उनको आवाज जा रही है मेरी? Any doubts in the program? No, ma'am. Okay. 0 is to stop the motor. हाँ, while one लगा दिया ना ऊपर. इसमें लगाया नहीं है, अदरवाइज while one लगा दोगे तो रिपीट होता रहेगा आपका. ये तो एक ही बार घूमेगी बस. Next interfacing is stepper motor interfacing. In case of stepper motor, ULN 2003 is the driver which is used, transistor IC, and the logic is Deepika.
4 bits are basically used. 4 bits of, let's say, port 0, they are used. So the logic is, suppose you want to rotate the stepper motor clockwise, then यहीं पे लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्सटेंशन को हेलो ये लग तो जाएगा, बट मैं फिर कराऊंगी कैसे? लैपटॉप इधर है ना. So the logic is 0 1. That means the 4 bits should be 0 0 0 1. This bit. And then next step is 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0. So this is nothing but 0x 0 1. And then it will be P0 is equal to 0x 0 2. And then P0 is equal to 0x 0 4 and P0 is equal to 0x 0 8. So this is for one direction. Now suppose you want to reverse the direction, then it will be in this order. So what you do is that after every step give some delay, then next step give some delay, next step give some delay. So this is how you can make two logics. One is one clockwise and you can make a subroutine. Different one is anti-clockwise. So in the main program you can call the clockwise, then and then you can clockwise and then some delay, and you can make it a while loop, so it will keep on moving continuously. Got the logic? So how the steps will be achieved? In this way. So 1 1 1 port bit will be given high, so that is why this is 1 2 4 8, and then to reverse the direction 8 4 2 1. Clockwise. So you want to change the direction, you just have to change the logic. So please try this. Please try this. आप पूरे का पूरा 4 बिट्स है ना, तो आप पूरे पोर्ट को ही कर लो, तभी तो 0 1 1. अब अगर आप एस बिट करोगे तो आपको एक एक बिट को करना पड़ेगा, फिर मतलब एक टाइम, मतलब 0 1 करने के लिए वो चारों बिट्स को 0 0 1 0 ऐसे करके. सो बेटर है आप पूरा का पूरा पोर्ट ले लो. प्रोजेक्टर वाली केबल तो उसमें चाहिए नहीं ना, हमने तो सिर्फ उससे इसको इनपुट देना है.
अच्छा हाँ मैम ये प्रोग्राम जब बंद करेंगे उसमें एग्जीक्यूट करेंगे तब तो हमें चाहिए हाँ आउट डिस्प्ले तो हमें चाहिए। लगा लेना तो हाँ निकाल देंगे हाँ ओके सिस्टम चलेगा मूव चाहिए चल रहा है ठीक है, थैंक यू अर्जुन। ये अगर हम USB टू TP9 कन्वर्टर अगर हमें मिल जाए, ड्राइवर होना चाहिए, मेरे लैपटॉप में तो है वो। क्योंकि सीरियल में किसी को लैपटॉप नहीं है अभी फिर से बस लैपटॉप चलाने का आपको यूज कुछ नहीं एक्चुअली इसको हम CPU के साथ ही यूज करते हैं ना, लैपटॉप के साथ कभी किया ही नहीं। आजकल तो सीपीयू में नहीं है ये तो बोल रही हूँ, अब पता चला मैं क्यों कह रही थी। So I hope all of you have tried this program. So this is the program. In this, delay subroutine is initially defined here. I mean, in this case, you can change the delay in case you want it very slow. Then you can take value from I0 to I6000. In case you want it medium delay, means the steps should be. This is basically the कितने उसमें आपका स्टेप का वो रोटेट होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप यहाँ का अपना डिले चेंज कर लीजिए। फास्ट चाहिए तो आप आई की वैल्यू 1000 तक लेके चाहिए। उसके बाद मेन प्रोग्राम में पहले while 1 मीन्स इट इज अ कॉन्टिन्यूस लूप, and then simple है, P0 is firstly given 1 delay, 2 delay, 4 delay, 8 delay. Similarly, in case you want anti-clockwise also, what you can do is in the main program you can use, you can make this as a subroutine like clockwise direction. You call it as a subroutine, then make P0 is 0, it will stop. Then again anti-clockwise के लिए आप क्या कीजिए, पहले 8 4 2 1, that's it. So this was the simple program for stepper motor programming. Does anyone have any doubts till now? Because now I am going to demonstrate all these programs on the hardware. And I will also show you how to use the key and the flash for programming the microcontroller. So in case you have any doubts, please ask me right now, because now I am going to start with the hardware portion. डिले बहुत छोटा नहीं है, 1 मिली सेकेंड का। 1248
परफेक्ट। मैम इसमें इनसे चेक कर लीजिए। ये हमने हेक्स में दिया, अगर मैं बाइनरी में देनी है 20001000 आगे बी लगाना पड़ेगा। हाँ बी लगाना और 0x लगेगा नहीं, 0x इज ओनली फॉर हेक्स। अगर आपको बाइनरी में कंफर्टेबल है तो आप इन वैल्यूज को 00000001 एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई बी। 0x is only for hex. So that means everything is clear to you because I am not getting any queries. So now I'm moving to the hardware part. होल्ड में मतलब मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच में आप उसको स्टॉप कर दीजिए। P0 इज इक्वल टू 0। एस बिट तो आपका सिंगल बिट रहेगा ना, कौन सा वाला बिट को, कौन से वाले बिट को स्टॉप करेंगे आप? चारों बिट को स्टॉप करने के लिए आप एक एक बिट को एस बिट करने से तो अच्छा है कि आप पूरा का पूरा पोर्ट 0 ले लो एंड पोर्ट 0 इज इक्वल टू 0। सी व्हेन वी आप चेक तो हो सकता है। अब करने को तो इसको भी हम, बिकॉज जो हम 4 पोर्ट्स ले रहे थे हमें ये पता होगा कि वो पोर्ट पिंस जो ये बेसिकली हमने बनाया 0001 2 4 कौन कौन से बिट्स के साथ कनेक्टेड अकॉर्डिंगली, लेकिन कितनी बड़ा आपका मेमोरी साइज हो जाएगा आपका उतना ही बड़ा हेक्स फाइल भी बनेगा। ऐसा क्यों करना है हमने? जब हमारा एक सिंगल इंस्ट्रक्शन P1 इज इक्वल टू 0x01 से काम चल रहा है तो आपने 4 इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखनी है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। कल जो है हमारा मॉर्निंग में आलोकदीप का लेक्चर है, बेसिकली रोबोटिक्स के ऊपर ही है कि प्रोग्राम कैसे करना है सी के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर मूवमेंट, आर्म मूवमेंट, तब आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रोबोटिक्स के मूवमेंट के लिए। बट इसमें अगर आप चाहते हैं आप सिंगल बिट को यूज करना देन यू कैन डू, बट आई विल नॉट एडवाइज दैट व्हाई टू वेस्ट सो मच ऑफ मेमोरी। इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों बनाना अगर आप एक सिंगल बिट से सिंगल पोर्ट 0 को एक वो कर सकते हैं। तो पहले के इसमें हमने इसलिए किया था क्योंकि 2 ही बिट्स थी, उसमें भी आप अगर पूरा का पूरा पोर्ट लेके करो तो कोई रॉन्ग नहीं है उसमें, बट फिर आपको अकॉर्डिंगली, अदरवाइज तो क्या था, सिंपल था 1001 आप लॉजिक। अदरवाइज आप उसी चीज को क्या कर सकते हो, पोर्ट 0 के का भी बना सकते हो, 0x01 1 0 0 0 एंड जो दोनों है तो वो 3, उससे भी चलेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर हार्डवेयर। प्रोग्राम दिखाने की जरूरत नहीं, हमने प्रोग्राम ऑलरेडी, लेकिन बर्न करने के लिए मैं एक बार पहले ही बता देती हूँ। एक्चुअली द थिंग इज कि अगर प्रोग्रामर का जो है ये लैपटॉप के साथ इसका कनेक्टर नहीं है तो हम सीपीयू में मैं इसको लगा रही हूँ। सो आई विल टेल यू इनिशियली वी हैव अ फ्लैश, बेसिकली ECE फ्लैश, एज यू कैन सी दिस आइकन हियर। एंड ECE फ्लैश में क्या होता है कि आप अपनी हेक्स फाइल सिलेक्ट करते हैं and then you burn it. So now as you can see this icon, and I will be using it because for some time my laptop display will not be there. We will be putting our focus on the our kit. So I'll tell you, like for example, we've already made hex file. So ECE flash and then browse. I had made my file in C. So when I've selected, I'll say flash because there is no hardware connected right now. Otherwise, that's why it's giving in an error. But when I will connect my kit, then automatically it will burn. So there are two things. One is the ECE flash, एक flash magic भी होता है.
So हम जो 8051 के लिए जो है EC flash is more simple because you don't have to make any communication baud rate compatibility issues etc. So that's it. You just give it the your folder name and it will burn. अब थोड़ी देर के लिए हमें ना डिस्प्ले उसका चाहिए लैपटॉप नहीं हार्डवेयर का नहीं मतलब मेरा प्रोग्राम तो उसमें है ना डिस्प्ले इन द सेंस कि मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बेशक वहां ना दिखे लेकिन मुझे तो प्रोग्राम तो मैं तभी बर्न करूंगी ना डिस्प्ले वाला जो केबल है इसको इसमें लगा दो। इसको नहीं ना यूज करते प्रोजेक्टर वाले केबल इसमें लगा दो तो प्रोजेक्टर इसका आ जाएगा सीपीयू का। अच्छा वो दोबारा कनेक्ट करना। नहीं अच्छा सेंटर हमें नहीं दिखेंगे उनको ये स्क्रीन ना दिखे तो कोई नहीं लेकिन वो ये नहीं देख सकते वहां से कैमरा से मैं प्रोग्राम इसमें डाल देते हैं उसके बाद फिर जो है हम लगा देंगे तब तक के लिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं बस प्रोग्राम डालने देते हैं उसके बाद लैपटॉप से दोबारा लगा देंगे। अभी ये लैपटॉप लगा हुआ है प्रोजेक्टर पे आप सीपीयू लगा लीजिए वहाँ पे मैम को दिखेगा ठीक है क्योंकि मैं यहाँ से शेयर कर दूँगी कैमरा आपको ये हार्डवेयर पे कैमरा रहेगा ना उनको हार्डवेयर पे दिखा दो ये तो मैं ऑलरेडी उनको बता चुकी हूँ क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि कील पे कैसे बनाना EC फ्लैश कैसे करना वो कोई इशू नहीं है कीबोर्ड का है आ जाओ बैठो बैठो ऑन नहीं है सीपीयू ऑन कीबोर्ड में तो नहीं आ रही है भाई इसमें तो आ रही है कीबोर्ड में नहीं आ रही है इस पे भी आना चाहिए कीबोर्ड में है ये लगा दिया कीबोर्ड में नहीं आई लाइट उसमें तो आ रही है डीसी मोटर का भी लगा दो इसके साथ ही ये स्क्रीन उनको नहीं दिखेगी ना ठीक है कोई इशू नहीं नहीं जरूरत नहीं है वो प्रोग्राम ऑलरेडी ये सारे मैंने इसीलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया बस उनको हार्डवेयर पोर्शन दिखाएंगे और इस पे जो डिस्प्ले होएगा वो दिखाएंगे उससे पहले मैं प्रोग्राम्स लोड कर लूँगी फ्लैश सर 1 मिनट इसमें लगाना EC फ्लैश
आलोक आपके लैब उसमें प्रोग्राम्स हैं? प्रोग्राम्स उसमें जो एम्बेडेड वाले जो फाइल थी ना आपको, हाँ उसमें ही है ना। हाँ, उसमें सारे प्रोग्राम। Are they able to see this? So this is our hardware basically, and as you can see here, this is the microcontroller, and its 4 ports are given here, and this is the programming cable for this. This is basically in system programming. In system programming means you don't have to take out your chip from your board and put it in the programmer. There are other universal programmers also, wherein you take the controller out and you put it in your programmer, program it and then put it back. But this is in system programming and flash programming के through हम directly इसको हमने अपने CPU के साथ लगाया है, program हमने अपने CPU में लिख दिया है. We have already seen the program, so just concentrate on this. And in this there are different displays, like this is 7-segment display, this is the LCD, and these are the 8 LEDs. Then there is one buzzer also, relay section, this is ADC section, these are 4 keyboard switches, RTC also. So right now, firstly I will demonstrate the program which we did in this STC on LEDs. So firstly we have to check, this is the driver for LED. Firstly, in our program, we have to check that which port is connected. In my program, I have connected port P1. So jumper हमें देख के लगाना है. So I have already created a hex file using Keel compiler. Hex file यहाँ पे दिख रही है आपको कहीं? Hex file. So I have already created hex file using the Keel, which I demonstrated to you today. So by using the ECE flash, I will simply select the file by the browse. I should know where my hex file is located. So I just use it and say flash. Then it will ask me, please reset the microcontroller. So there is one reset button given here. I will simply press it. आलोकदीप देखना ये फ्लैश क्यों नहीं हो रहा है? हो गया लूज था. लगता है ऐसे निकालना पड़ेगा. हो गया. फ्लैश इरेज कमांड होती है. केबल दूसरी चेंज कर देते हैं.
दूसरे उसमें पोर्ट पे लगाना डिवाइस मैनेजर में ये चेक कर लेंगे कि कॉम्पोर्ट है कौन सा है कहाँ से जाके करेंगे डिवाइस मैनेजर कॉम कोड लगाया कहाँ पर है बस लगता तो ये कंट्रोल डिवाइस में डैश नहीं कंट्रोल नहीं होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये डिवाइस में प्रिंटर वैसे तो इधर ही लगाते हैं तो रीसेट करने से हो जाता है रीसेट हो रहा है देखो वो तो हो रही है डिवाइस मैनेजर तो डिवाइस में प्रिंटर डिवाइस मैनेजर कॉम कोड 1 ही है कॉम वन ही है कॉम 1 ही सिलेक्ट किया हमने वर्किंग प्रॉपर्ली उसका प्रोग्रामर तो नहीं खराब हो गया कुछ भरोसा भी नहीं है इनका इतना हॉट भी है ये टच करके देखो टच करके दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा टैब से दूसरा ले आओ टैब की उधर ही पड़ी है ठीक है अदरवाइज ना ये रीसेट करने के बाद ना रीसेट करने के लिए इसको ऑफ करके देखें क्योंकि वो तो रीसेट बाय स्विच है ना पावर ऑफ करके देखें और उसके बाद भी फ्लैश इसका मतलब द प्रॉब्लम इज विद दिस फ्लैश प्रोग्रामर ओनली रीसेट तो हो रहा है वो नहीं फ्लैश वो कर रही है कंट्रोलर तो खराब नहीं है क्योंकि इसका मतलब इसकी पोर्ट पिंस में तो वो है आउटपुट जो इसको नहीं है actually there is some problem with the either the programmer or the controller we are trying to change the programmer it was working fine but this is the thing with the hardware we never know about it so what I did was basically I have connected this port 1 with the LEDs the LEDs दिख रही है so I've connected this port 1 with the LEDs and through ECE flash I uploaded the program and I burned the program into the controller and it will ask me that you have to reset the controller similarly we can do other interfaces also like with LCD program LCD program also we have done in the class
So the only procedure is this only. The only difference is that, like in this case, I connected the port with the LEDs and I uploaded the hex file which I had created for the my LED. Similarly, for my LCD, these are two. One are the control lines and the other are the data lines. These are two jumpers here, as you can see with for the LCD interface. So, but I'll have to see in my program that, for example, I have used port 0 and for the control lines, then I'll connect the port 0 with the control lines, and if I've used port 1 with the data lines, accordingly I will make connections like this. Right now, I'll just make it arbitrarily because you are not able to see the program. See. So LCD will display whatever program you have written for your LCD. You create your hex file, upload it, and then LCD will give the display accordingly. नहीं, इसके मेमोरी में इस समय जो भी प्रोग्राम लास्ट बर्न होगा वो उसको डिस्प्ले करेगा. लेट्स से लास्ट टाइम मैंने इसको एलईडीज को रोटेट करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखा था इसकी मेमोरी में, और लेकिन जितनी बार भी आप इसको फ्लैश करेंगे वो पुराने प्रोग्राम को इरेज करके नया प्रोग्राम बनेगा. Similarly, you can have other interfaces also. तो मैम जैसे हमने भी अपना प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बनाया, उसमें कोई हमने लिया कंट्रोलर, तो उसमें जब हमने इसको बर्न करना है वो तो फिर परमानेंट रहेगा हमारा वो एक इंडिविजुअल, तो हम ये फ्लैश यूज कर सकते हैं. तो एक बार फ्लैश आपने यूज किया, एक बार इसको बर्न करने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद उसमें कोई चेंजेस ना हो तो आप रोम यूज कीजिए. ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया. सो दिस इज द बजर प्रोग्राम. I have interfaced my port with the buzzer. Similarly, stepper relays also. These are two relays, and there is one driver IC for stepper motor control section also. So this is ULN 2003 transistor which is given here. So just connect your stepper motor to this, and your stepper motor will also run. And accordingly, similarly, you can have your program for 7 segment display also. So this is the 7 segments. वो आपको अपने प्रोग्राम में देखना है. ये आपने जैसे मेरे केस में मैंने अगर पोर्ट 1 यूज किया है पर्टिकुलर इसके लिए एलईडीज के लिए, तो मुझे वो पोर्ट 1 पे ही कनेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट इट इज गिविंग द सोर्स. इट इज अ सोर्स और अ सिंक डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर यूजिंग इट इन हाई मोड और लो मोड. So microcontroller will work either as a source or sink. So is it clear? अब I think वो वाला कर दीजिए ताकि always happens, always. Not a blast. So सर मुझे पेन ड्राइव भी दे देना. So do you have any doubts in what I demonstrated? Any doubts in what I demonstrated? What they able to see? देख पाए थे ये?
NIT Greater Noida. NIET Greater Noida. Any doubts? No doubts, ma'am. Thank you. Were you able to see the demonstration? Yes, ma'am. We have seen that demonstration. Okay. Dronacharya Group of Institutions, Greater Noida. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my question is, how do you write that program in the white tape? How is the program loaded? White tape. केबल केबल This is just a connector. We Okay. don't write any program here. We write our program in our Keel compiler. The Keel compiler creates the hex file. That hex file is then loaded with the help of this programmer. This basically is the interface between your kit and your PC. And this is just a connector. We don't write our program in this. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Meerut Institute of Engineering and Technology. जी मैम। कोई doubts? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। So next is Dronacharya Group of Institutions, Gurgaon. हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम, कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली हम लोग वो ना केल का 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, केल 5, तो मे बी दैट्स वाई सम प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपका जो आइकन है वहाँ पे केल 4 आप लोग यूज कर रहे हो। और पुराना वर्जन है, बट कील 5 आल्सो वर्क्स फाइन। मेरे डेस्कटॉप पे कील 5 ही है। ओके मैम, तो हम लोग उसको रीइंस्टॉल करेंगे तो देन विल बी एबल टू क्रिएट द हेक्स फाइल आप एंड देन। रीइंस्टॉल करके देखिए, बिकॉज़ हाँ इंस्टॉलेशन मैम, में कुछ एरर हाँ आ रहा मैम, हाँ, and it will be better if you please send that programs by mail to us. It will be helpful. है। श्योर, आई विल सेंड। Okay, thank you very much, ma'am. बाकी प्रोग्राम को बर्न कैसे करना है उसका रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, वो समझ में आ गया ना। आप दो तरह से उसको कर सकते हैं। देयर आर टू, one is known as in system programming. What I demonstrated today was in system programming. You just have to use a flash programmer, you connect it to your PC. The second one you connect to your board or whatever system you have developed, and ECE flash use कर लीजिए या फिर आप फ्लैश मैजिक यूज कर लीजिए। तो दोनों में से कुछ भी यूज करके आप जो है उसको प्रोग्राम, जो आपने हेक्स फाइल बनाई है ना अपनी कील की, उसको आप अपने इसमें बर्नर में उसमें बर्न कर दीजिए और यू कैन सी द आउटपुट अकॉर्डिंगली। MMU मुलाना, वी आर नॉट कनेक्टेड। बस से हो रहा है। हेलो, यस, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम फ्रॉम MIT मेरठ। जी। मैम क्वेश्चन इज, जो आप किट यूज कर रहे हैं वो कौन सी किट है मैम? एक्चुअली क्या कहते हैं, वी हैव डिफरेंट किट, वी हैव सम किट एम्बेडेड किट बट इज डिफरेंट, इट इज हैविंग 89351, but which one kit you are using actually? There are different companies. I'm not supposed to name any company as such on ICT mode, because that will be like giving a commercialization of that. But the thing is that you can use any company. और ये जो बोर्ड था ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है। यूनिवर्सल बोर्ड का मतलब है कि उसमें कोई कंट्रोलर लगा हुआ है और कंट्रोलर के उन्होंने चारों पोर्ट साइड में दिए हुए हैं। आप अगर कैमरा के सामने अपनी किट लेकर दिखाएंगे जरा मुझे, देन आई विल टेल यू कि आपकी किट को कैसे यूज कर सकते हैं। आप Definitely ma'am, definitely we will do this. No sir. इसलिए डाउट हो रहा है। आपका कंट्रोलर कौन सा है सर? आपका कंट्रोलर कौन सा है? 89351 RD2।
इसमें एक मिनट कंट्रोलर दिखाएंगे कहाँ है आपका? मैम इट इज 89C51RD2। मैम इसमें दो लगे हैं, एक पिक का लगा है, एक 89C51 का लगा हुआ। अच्छा, ये 89C51 को भी तो यूज कर हेलो, सकते आवाज जा रही है क्या मेरी? हैं। हाँ, NXP है। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपका जो 89C51 आप बता रहे हैं ना, वो एटमेल कंपनी का है एंड 89 इज फ्लैश मेमोरी ओनली। सो हाँ आप उसका जो आपके उसके साथ किट के साथ आपको एक प्रोग्रामर मिला होगा ना? मैम, एक्चुअली अच्छा ना हाँ, इसमें ठीक है ठीक है अलग से ठीक है ठीक है। इसके साथ में ये आपका लेफ्ट साइड में है, वो है राइट में आपका पिक है। लेफ्ट हाँ साइड में मुझे दिख रहा है दिस यस इज 89C51। मैम, सो इस इसमें हम यही पूछना चाह रहे थे, इसमें प्रोग्रामर अलग से नहीं है, तो ये प्रोग्राम मतलब कैसे होता है? इसमें हमारे हटाना, किट हटाना, इसमें बस ये केबल है हमारे पास, कौन सी? serial cable like this, and we just need to connect this serial cable through USB to serial converter with our PC, and तो then we'll burn the program through with flash magic. आपकी ना सर किट के अंदर ही सीरियल पोर्ट होगा, आपकी इसकी जो प्रोग्रामिंग है हाँ इसी के थ्रू हो जाएगी। हाँ मैम, वो हो तो रही है, स्टेप्स तो हाँ, हमें पता है, मैक्स बट एक्चुअली 232 का जैसे वो लेना पड़ेगा आपको ना। मैम। एक DB9 कन्वर्टर जो आता है ना मैक्स 232 का, बस वो हाँ लेना हाँ पड़ेगा आपके सीपीयू के साथ लगाने के लिए। मैं आप हाँ नेक्स्ट क्लास में आऊंगी ना, मैं आप हाँ मेरे पास है वो 20 रुपीज तक के कुछ आते हैं मार्केट से। आई विल डिमॉन्स्ट्रेट यू, वो इसके मैम। साथ आपका डायरेक्टली हो जाएगा, आपको सेपरेट प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है इसमें। Ma'am, that's why I'm asking that हमें we know the steps, we have done the program on the kit also, what you हम्म have taught us, हम्म and but my question was that like we do this kit doesn't require any separate programmer, then how it program the code किट in के the अंदर program? किट के अंदर ही लगा होगा आपके। अच्छा, okay किट के अंदर ही होगा सीरियल पोर्ट। okay okay ma'am, okay, इनफैक्ट thank आजकल लेटेस्ट ऐसे ही आते हैं। you, okay okay, thank you ma'am. ये पिक नहीं है, एटमेल के भी होते हैं। लाइक आई हैव स्मॉल डेवलपमेंट बोर्ड्स, उन स्मॉल डेवलपमेंट बोर्ड्स के साथ भी सिर्फ एक आपको DB9 कनेक्टर आपको लेना है और वो डायरेक्टली आप अपने सीपीयू के साथ लगाइए, आपको उसके साथ प्रोग्रामर सेपरेट नहीं चाहिए। सीमॉस सीमॉस सी हाँ उसके लिए हमें सेपरेट प्रोग्रामर का यूज करना है। प्रोग्रामर इस प्रोग्रामिंग किट में क्या होता है, हम इनको एक अभिलाष डिसाइड करते हैं कि कौन सा किट में किस माइक्रोकंट्रोलर से कनेक्ट करना है। तो जैसे बेसिकली जो यूनिवर्सल प्रोग्रामर है उसमें भी एक कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर में सारा सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो कंप्यूटर और हमारे कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो बेसिक उन्होंने एक जो पिक का यूज किया वो सारा कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो वो किट के अंदर ही है उनके। हमारी जो किट है ना इसमें 89V है, सो V स्टैंड फॉर मतलब वो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग है, इसलिए हमारे को सेपरेटली वो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर बताइए, MIT मेरिट से मिस्टर अभिलाष शर्मा, आपने कुछ पूछा था अभी? मैम अभिलाष मैं पूछ रहा हूँ आपसे जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम कील के अंदर जैसे स्टार्टिंग में हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा हम लोग कंट्रोलर है, कंट्रोलर लेंगे जी। हाँ, मैम अगर सेम प्रोग्राम के लिए अगर हम कंट्रोलर दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो क्या आउटपुट अलग अलग होगा? जैसे आउटपुट अलग होना चाहिए। आपने आपका फिलिप्स सेलेक्ट करा था, अगर मैं फिलिप्स की जगह कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो क्या आउटपुट अलग होगा? आउटपुट मतलब आपके हेक्स फाइल अलग होगी, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे हमने सिमुलेट करा, जैसे आप बात कर रहे थे कि डिले लगा के हम कोई वैल्यू चेंज कर लें, है ना, या हमने -4 से +4 तक हम गए थे, एक प्रोग्राम था हमारा, है ना, जिसमें हम पिन के ऊपर वैल्यूज चेंज कर रहे थे। तो अगर हम कंट्रोलर कोई और लेंगे तो क्या आउटपुट कुछ और आएगा? जो सर आपका मिसमैच हो जाएगा ना। एक्चुअली क्या हुआ है कि आपने जो अपनी हेक्स फाइल जब बना ली तो आपने उस कंट्रोलर के हिसाब से बना ली, लेकिन जब आप अपने सिस्टम में वो लगाएंगे, जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे अपना किट के साथ या अपने कंट्रोलर के साथ अपने हेक्स फाइल को, सो देयर विल बी अ मिसमैच। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन पूछने का जो मोटो था ना वो इसलिए था क्योंकि कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में जब बच्चे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम उनको केवल कील पे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के उनको सी प्रोग्रामिंग बताएंगे। वो जो भी बोर्ड मार्केट से लेके आएंगे उसके ऊपर वो बर्न करने की बात करेंगे। तब उनको जब वो कील के ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे ना, तब उनको कौन सा कंट्रोलर उन्होंने यूज करना है वो उनको पहले ही देखकर ही फिर आप अकॉर्डिंगली हेक्स फाइल बनाएंगे।
ओके, अगर मैम मैं केवल ये बात करूं कि ठीक है हार्डवेयर नहीं है, मैं केवल बच्चों को सॉफ्टवेयर पे फील कराना चाहूँ फिर तो तो मैं कौन सा भी। फिर तो कोई भी कर लीजिए, आपको जस्ट एक समझना ही है यस कि यस हेक्स यस। फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, तो अब आप कुछ भी ले लीजिए। लेकिन जब आपने उसको एक्चुअली बर्न करना है ना, और आपका कंट्रोलर सेम नहीं हुआ, तब हार्डवेयर डिपेंडेंट मेरे को कंट्रोलर चूज करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मिसमैच हो जाएगा। आपका हेक्स फाइल जो आप बना रहे हैं ना, हम्म, आप ऐसा भी करके देखिए, 2 कील के प्रोग्राम बनाइए। एक आप ले लीजिए 8089C51, दूसरा कोई हाँ। फिलिप्स का ले लीजिए। ओके अकॉर्डिंगली आप आपकी जो अल्टीमेट फाइल बनेगी, आप देखिए सेम बन रही है कि अलग बन रही है। ओके ओके ओके, ठीक है मैम, ये मैं चेक करूंगा। थैंक यू। आपको कुछ करना है डेमोन्स्ट्रेट? टाइम तो है, तो आप बना रहे हैं। फिट में किसी पिन को लो हाई करना है, जैसे मान लो एक सेकंड लो, एक सेकंड हाई करना प्रोग्राम बना दें, तो उससे डीसी इनपुट हमारा रन कर और वो किट का वो प्रोग्राम तो चल ही प्रॉब्लम रहा कर रहा है, चल ही रहा है। है। आर्डिनो मैंने आर्डिनो से बताया था, मेरा फिट से बताना है। अच्छा, उनको आर्डिनो से बताया। तो ये क्या है? ये एक्चुअली ये तो ड्राइवर ना आर्डिनो बोर्ड आ गया। अच्छा अच्छा नहीं तो अच्छा। तुम तो कंप्लीट बता नहीं है, फिर रोबोटिक्स में पूरा बताया तुमने। कल फिर इसका और डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे। बाकी कल भी हमारी जो क्लास है ना, वो भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर ही होगी। उसमें हम आपको मतलब रोबोटिक्स की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कैसे की जाए, और एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग को यूज करके किस तरह से आउटपुट हम देख सकते हैं अपना रोबोट के ऊपर, या डीसी ड्राइवर वाला भी, डीसी मोटर वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी करके, और स्टेपर मोटर वाला भी एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कर लेंगे। इन द मीन वाइल मैं आपको वो बता देती हूँ, टाइमर का कुछ रह गया था ना उस दिन, टाइमर की प्रोग्रामिंग पूरी नहीं हो पाई थी, बिकॉज एक्चुअली वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट सेड कि दे वांट टाइमर्स। एक्चुअली पहले प्लान नहीं थे, तो उसकी टाइमर की प्रोग्रामिंग पूरी नहीं हो पाई थी। तो अभी आज बिकॉज वी स्टिल हैव सम टाइम विद अस, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे चूज करते हैं। हेलो एक्सक्यूज मैम। हाँ जी मैम सर्वो मोटर भी कवर करेंगे क्या आप? सर, वो मोटर कल कर देंगे, यस मैम प्लीज। क्योंकि रोबोटिक आर्म के अंदर सर्वो मोटर ही मेनली यूज होती है ना, हाँ हाँ तो कल करेंगे कब। ठीक है मैम। ओके। आप में से किसी के पास मेरा वो लेक्चर है 8051 वाला? मेरा एक्चुअली आज वो पेन ड्राइव लाई नहीं। आलोक, आपके पास नहीं है 8051 की जो मेरी पीपीटी है? एक्सक्यूज मैम। यस। मैम वन मोर क्वेश्चन, सॉरी फॉर अगेन डिस्टर्बिंग यू। नहीं बताइए। मैम जो आपकी ये लेक्चर की वीडियोस हैं ये मिल सकती है हम लोगों को? वीडियो सर नेट पे अवेलेबल है। मैम NITRRR की साइट पे? NITRRR के उसमें क्या है कि बाद में इसकी एडिटिंग करेंगे, जैसे टी ब्रेक वगैरह, लंच ब्रेक आ जाता है, उसको हटा के तो वो NPTEL पे भी आएगी हमारी। अभी एज ऑफ नाउ अगर आज की डेट में आपने देखना है हाँ हाँ तो मैं हाँ। आपको लिंक सेंड कर दूंगी। ये पूरा मतलब यस एज सच, इनफैक्ट अगर अभी भी आप देखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो ये लाइव यूट्यूब। आ रहा है। ओके। दिस इज लाइव। आप निटर CHD कीजिए उसमें, हाँ ETV2, ETV2 न्यू, ETV2 न्यू करके एक आइकन होगा ग्रीन मैम कलर जस्ट सेकंड, विल नोट डाउन प्लीज। मैम बताइए। का। निटर CHD, निटर्स हाँ इकट्ठा है ये, NITRRR CHD। CHD ओके। इसमें जब आप जाएंगे ना तो वहां पे अलग अलग आएंगे, ETV1, ETV2। सो उसमें ETV2 न्यू, ग्रीन ETV2 कलर, न्यू। न्यू, ओके एक ग्रीन कलर का आइकन आएगा। ओके उसमें ये हमारा पूरा वीक है, जैसे एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर डे 1, डे 2, डे 3, आज डे 4 है। ओके तो अभी क्या ये पूरा कंटिन्यूस चल रहा है ना यूट्यूब में, एज सच वी आर ऑन एयर, वी आर लाइव, इनफैक्ट एनीवन कैन वॉच अस।
सो बाद में क्या करते हैं, हमारी जो टीम है, एडिटिंग टीम, दे एडिट ईच अवर लेक्चर्स, लाइक जैसे अभी तो ये पूरे दिन का ही चल रहा होगा उसमें यूट्यूब में, फिर वो लेक्चर वाइज उसको डिवाइड करके हमारी जो एनपीटेल की निटर की एनपीटेल है, एनसीटेल है, उसपे जाके हर एक वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हमारे पुराने वीडियोस भी हैं वहाँ पे। मैम एनसीटेल, जी, एनसीटीईएल, NCTEL, वो हमारी निटर की वेबसाइट है nittrchd.ac.in, ओके 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 उसमें है। ओके। एंड मैम पीपीटीज जो आप यूज कर रहे हैं वो भी अवेलेबल हो सकती हैं? मैं पीपीटीज भी भेज दूंगी, वैसे मेरी सारी पीपीटीज जो ये है ना, ये स्लाइड शेयर में मैंने डाली हुई है, सो इन केस यू हैव एनी अकाउंट इन स्लाइड शेयर, तो आप वहां पे जाके मेरी पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हैं। मैम कैसे सर्च करेंगे वो? स्लाइड शेयर, SLIDESHARE, स्लाइड शेयर, उसमें जाके ऋतुला ठाकुर डालिए। ओके, बाय योर नेम, बाय माय नेम, यस। और अदरवाइज भी हमारी जितनी भी पुरानी भी वीडियोस है, बिकॉज इससे पहले भी माइक्रो कंट्रोलर के काफी कोर्सेज हमारे हुए हैं, वो भी आप यूट्यूब में जाके ऋतुला ठाकुर जब डालेंगे तो मेरे सारे पिछले लेक्चर्स भी हैं, वो है वहां पे, जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड थे, कुछ अलग अलग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, ऐसे कोर्सेज भी हुए हैं ना हमारे। ओके। एंड मैम बबन सर के पीपीटीज बबन सर की भी है वहां पे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मैं अभी आप लोगों को टाइमर का उस दिन रह गया था, जिस दिन सर का लेक्चर था, टाइमर वो मैं आपको बता देती हूँ। See, as already been discussed by Dr. Baban Kumar in his lecture on timers, there are two timers of 8051. One is timer 0 and one is timer 1. Both of these are 16-bit timers, but they can also be accessed as 8-bit timers separately. This is the timer 0, and similarly we have timer 1. वो मैं करती हूँ एक्चुअली, इसमें ना कुछ साउंड डाली हुई वो हट नहीं रही है, मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो उसमें क्या है कि हम इन ये जो 16-बिट टाइमर्स हैं, इसको हम सेपरेटली TL0, यस, अच्छा, so they can be separately accessed as two 8-bit registers also, TL0 and TH0. So the first task is, which is very important when you program a timer, is to initialize the T-mod register. T-mod register basically is used to specify which particular mode is being used and whether you are using timer 0 or timer 1. So actually this is not timer 2, this is timer 0. So suppose you are using timer 0, then you will be using these 4 bits. If you are using timer 1, then you will be using these 4 bits and the other bits will be automatically 0. Because in this case we are using internal software for starting and stopping the timer, so that is why the gate is always 0 in this case. But whenever we are using external interrupt or hardware for starting and stopping the timer, at that case gate will be high. But in all these cases, because we are using the software, that means 2 instructions, TR is equal to 0 and TR equal to 1, so that is why gate will be 0. Then next bit, that is C/T bar. This is used to specify whether you are using them as a timer or a counter. Because we are using them as a timer, so this will be 0 because it is C/T bar. It will be 0. And then these two, M1 and M0, are used to specify the mode. There are 4 modes. If both the bits are 0, mode 0 is selected. If it is 0, 1,
1 mode is selected, 1 0 mode 2 is selected, 1 1 mode 3 is selected. Mostly it is mode 1 and mode 2 which is used for the programming of the timers. So this was the first thing, that is how to initialize the T mod. For example, if we want to see that in this case T mod is 0 1, then which mode and which timer is used. So we know that because all these are 4 and this is in use, that is timer 0 is used, and the last 2 bits, that is these are used for the mode selection. So that is why mode 1 is used of timer 0. And what is the clock source for timer? It is the crystal frequency which is attached to 8051 timer itself. It is the source. Suppose we have 11.0592 megahertz clock frequency which is attached to the crystal, then always remember that the frequency for the timer is 1/12 the frequency of the crystal, because this is basically used for calculating the total amount of time delay used. So that is very important, that you should know how much crystal frequency is attached. Now, how does it work basically? Firstly, the mode 1 programmer, it is a 16-bit timer mode. So these are the various steps. Firstly, you have to load the values into the TL and TH register. That day also we discussed. Then you have to start the timer. This is assembly, but in case of C, if you have to start the timer, then we have a bit which is known as TR. Now, if you are using timer 0, then TR0 will be used. If you are using timer 1, then timer 1 will be used. So whenever you want to start the timer, you have to give a high to the TR1 or TR0. So suppose you start the timer, it will be TR, let's say 0 is used, TR0 is equal to 1. So the moment you do TR is equal to 1, the timer will start. And whatever value you have loaded into the timer, into TH and TL, it will start getting incremented by 1. For example, if you have loaded the values FFF0, then it will be FFF0, FFF1, FFF2, 3, 4, ऐसे करते करते करते, because 16-bit timer है तो इसकी maximum value कितनी होनी चाहिए? 2 raised power 16, 64, that is FFFF. So maximum कहाँ तक count करेगा वो? FFFF तक. जैसे ही उसका FFFF गया, उसके बाद वो रोल ओवर हो जाएगा अगेन इनटू 0, एज यू कैन सी हियर. ये रोल ओवर हो गया. जब तक ये काउंटिंग चल रही थी तब तक आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग था, ओवरफ्लो फ्लैग, वो लो था. बट जैसे ही ये रोल ओवर हुआ, आपका ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो हाई हो जाएगा. सो दिस विल इंडिकेट, दिस ओवरफ्लो फ्लैग विल इंडिकेट दैट नाउ टाइमर शुड बी स्टॉप्ड. जितना हमें डिले देना था वो उतनी वैल्यू से हमें मिल गया है. Mulana Center, I would please request you to kindly concentrate on the lecture. Sitting here, we are able to see all the participants. Please, it's a request. So, the moment it rolls over to 0, overflow flag will be high. At that time, we have to stop the timer by making this value 0. We started the timer by making this value high, whereas we stopped the timer by making the timer bit, that is TR0, low. And in C, how do we do that? Simply TR is equal to 0. That means we have stopped the timer. The second thing which we have to do is we have to again overflow flag को हमारे को clear करना पड़ेगा, यानी कि उसको फिर से low करना पड़ेगा ताकि आपका फिर से वो जो cycle है वो start हो जाए. So this is how. Suppose now I have told you the steps and we know कि अब हमें और मॉनिटर किसको करते रहना है, हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारे को ओवरफ्लो फ्लैग, अब आपको उस टाइमर को स्टॉप करना है विद द हेल्प ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग. तो आप मॉनिटर करते रहेंगे ओवरफ्लो फ्लैग को जब तक काउंटिंग चल रही है, ओवरफ्लो फ्लैग लो है. तो स्टॉप करने के लिए कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी? इफ TF0 इक्वल टू 1. सो हमने डबल इक्वल टू करके क्या कर दिया, हमने TF को कंपेयर कर लिया 1 के साथ. तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आपका जो है दैट इज स्टॉप द टाइमर बाय TR is equal to 0 and also clear the timer flag TFX is equal to
0, and then you again repeat the whole process. Now the question is, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें TH और TL में वैल्यू कितनी लोड करनी है? बिकॉज एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका हो ये रहा है कि आपकी जितनी काउंटिंग चलती है ना, जो वैल्यू आप इसमें देते हैं टाइमर में, और FFFF तक जो जाती है, वो काउंटिंग बेसिकली आपका डिले प्रोड्यूस करती है. अब हमें पता कैसे चलता है कि हमें डिले देना कितना है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. सपोज आपने कुछ वैल्यू दी FFF0, so how do we know कितना डिले कैलकुलेट हुआ? What you do is total FFFF minus that value which you loaded into your timers, and then plus 1. This plus 1 is basically for the rollover, क्योंकि एक काउंटिंग आपने बाकी तो कर ली FFFF0 से FFFF तक, वो तो काउंट्स आपके आ गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा काउंट आपने जब 0 में दोबारा गया, वो भी तो काउंट हुआ है ना आपका फ्लैग रजिस्टर या टाइमर को स्टॉप करने से पहले. सो उसके लिए हमारी ये वाला ही ये +1 किया, एंड दिस multiplied by this is known as a machine cycle. Now this machine cycle will be different for different controllers, and it will also be different, it will depend upon the crystal frequency on which your controller is working on. Now this is how you calculate the time delay. Now it can be reverse. ये क्वेश्चन तो ये हो गया कि अगर सपोज आपने कुछ वैल्यू दी उसको और आपको टाइमर कैलकुलेट करना है, तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता. रियल टाइम में क्या होता है? We tell you that you do this process, give a delay of 20 milliseconds, and then next step. Now when you have to define 20 milliseconds का delay, तब हमें कैसे calculate करनी है वो values? How to find the values which are to be loaded into the timer? This is the procedure for that. Whatever desired time delay, let's suppose you want 20 milliseconds time delay, you divide that 20 milliseconds with 1.085 microseconds, then perform whatever value you get by dividing it, minus that value from 65536. You got some value, वो value आपको डेसिमल में मिल गई, आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और वो वैल्यूज को आप फिर TH और TL में लोड कीजिए. अलग अलग ही करना है. These are two 8-bit registers, तो इकट्ठा कैसे करोगे आप? वो दोनों मिलकर एक पूरा 16-bit रजिस्टर बना. Let's say timer 1 है, so timer 1 is a 16-bit register, but it is actually two 8-bit registers. So वो two 8-bit registers में से जो lower bits हैं, they are your TL, जो upper 8 bits हैं, they are your TH. So आपने अगर suppose timer में value डालनी है FFF0, so जो lower 8 bits हैं F0, they will be loaded into TL, upper 8 bits FF will be loaded into TH. That's it. So this was about how to write your programs in the mode 1. So basically these are the steps. आप ये जो ब्रैकेट में दिखा हुआ है इसको सिंपली इग्नोर कर दीजिए. ये स्टेप्स अगर आप देखेंगे ना, so इन्हीं से ही आपको प्रोग्राम लिखना आ जाएगा एक टाइमर का. लोड द टी मॉड वैल्यू. टी मॉड अगर हम इसको हम इंस्ट्रक्शन वाइज देखें, लोड द टी मॉड वैल्यू. टी मॉड इज इक्वल टू 0x, जो भी आपने इसका लॉजिक बनाया, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर यूजिंग टाइमर 0 और टाइमर 1. लोड रजिस्टर्स TL and TH. TL is equal to 0x F0, TH is equal to 0x FF. Start the timer. TR0 is equal to 1. Keep monitoring the timer flag. If TF is equal to 1, the moment this condition is true, stop the timer. How? TR0 is equal to 0. Clear the timer flag. TF is equal to 0, and then go to करके वापस लोड दोबारा से आपने वैल्यूज कर देना. इसमें +1 इंक्रीमेंट होगा इस प्रोसेस में, जब हम एक फॉर्मूला नोट डाउन किया था हमने +1 हमने कर. हेलो मैम. हाँ जी मैम जी स्टेप 4 में वी आर मॉनिटरिंग द टाइमर फ्लैग जी. So can we attach some interrupt with timer flag so that whenever the count is over, it can automatically take some decision? That is what I said. Now there are two things. You start and stop the timer either by using interrupts or by you use the software.
In this case, to start and stop the timer, we are using software. हम instructions के through ही timer को start and stop कर रहे हैं. लेकिन अगर आप हार्डवेयर इंटरप्ट यूज करते हो तो उस केस में tmod को जब हमने प्रोग्राम किया था तो tmod के भी अंदर गेट की जो वैल्यू थी, यस मैम, गेट को आप हाई कर देंगे उस केस में, तब आप एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं. which interrupt we can use in this case, hardware case? वो आपको देखना पड़ेगा इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग के अंदर. Okay. इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग इट्स अ सेपरेट थिंग, इट्स अ सेपरेट टॉपिक दैट कैन नॉट बी कवर्ड राइट नाउ. इंटरप्ट होता है INT 0 और INT 1 होते हैं. किसकी? Yes. Will you explain the interrupt programming? No, that will not be explained. इतना टाइम नहीं है इसमें. इस वाले STC में इंटरप्ट प्रोग्रामिंग के लिए टाइम नहीं है. Okay मैम, thank you. क्या पूछ रहे थे आप? इंक्रीमेंट में +1 करना है. जब हमने रिटर्न जाना तो एक हमारा वापस जाने के लिए भी हम वो करते हैं यूज पे. उसके लिए आपने वो जो फॉर्मूला हमें बताया था, हाँ, उसके लिए वो हम कहते हैं कि +1 हम कौन से प्रोसेस के अकॉर्डिंग +1 करते हैं. +1 इज एक्चुअली जब आपका टाइमर फ्लैग सेट होने से पहले रोल ओवर होता है. आपका काउंटिंग कैसे शुरू हुई, कोई भी वैल्यू आपने दी तो वहां से वो काउंट होता गया कहां तक पहुंचा, FFFF तक गया. FFFF पे जाने के बाद वो फिर 0 होगा, उसको रोल ओवर बोलते हैं. द मोमेंट इट बिकम 0 तब आपका टाइमर फ्लैग विल बिकम हाई. तो हमने करना क्या है, हम बिकॉज यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहे हैं ना, हम एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारा वो टाइमर फ्लैग को आपने मॉनिटर करते रहना. तो दैट टाइमर फ्लैग विल इंडिकेट दैट नाउ द टाइमर इज टू बी स्टॉप्ड. Now can you tell me that in order to give the largest delay, which value should be loaded into the TLN and TH? My question is, in order to get the largest delay, which value should be loaded into TL and TH? It is, hello ma'am, this is from MIET, 0000. Yes. It should be 0000. Why? Because ultimately आपकी ये वाली जो वैल्यू है यहां से इंक्रीमेंट शुरू होना है और जाना कहां तक है, वो FFFF तक. तो आप इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो बेसिकली इससे माइनस. तो मिनिमम वैल्यू आप इसमें क्या डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं. वो पूरा 65535 plus 1, that is 655. So what is the largest delay which can be generated is 65535 plus 1, that is 65536 multiplied by the machine cycle. So this is how we calculate the time delay. So there are two things, either use the timers or use a for loop for the delay. टाइमर्स होते हैं जहाँ पे आपको एक्यूरेट टाइम डिले चाहिए होता है. फॉर लूप थोड़ा क्रूड होता है कि वो कुछ डिले जनरेट करेगा. वही तो समझाया था अभी. जो स्टेप्स लिखवाए थे वो आपने बस उनको प्रोग्राम में लिखना है, C लैंग्वेज में लिखना है, ये तो बताया था मैंने. लोड द tmod वैल्यू, tmod इज इक्वल टू, सिंपल जैसे एक 8-बिट रजिस्टर की तरह आपने इसको यूज करना. लोड करने का मतलब क्या है, जैसे हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं 0xf whatever, फिर आपने लोड करना TL, so TL इज इक्वल टू 0x, TH इज इक्वल टू 0x. तो उसके बाद स्टार्ट द टाइमर, TR इज इक्वल टू 1, दैट इज स्टार्ट द टाइमर मींस उसको हाई देना है. जब स्टॉप करना है तो दिस इज इक्वल टू 0. सिमिलरली कीप मॉनिटरिंग टाइमर फ्लैग इफ TF इज इक्वल टू 1. देन अगर वो 1 मींस वो कंडीशन ट्रू हुई तभी वो नेक्स्ट पे जाएगा, और नेक्स्ट में क्या कर लेना है आपने, स्टॉप करना है. सो TR इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो यू हैव टू क्लियर द टाइमर फ्लैग्स, सो TF इज इक्वल टू 0. So that was all for today. Any doubts? Any doubts? NIT Greater Noida, any doubts? Ma'am, no doubts. Thank you. Dronacharya Group of Institutions, Gurgaon.
मैम MIT में हेलो मैम, हाँ जी. नो डाउट्स, थैंक यू वेरी मच। MIT Meerut. नो मैम, नो डाउट। MMU Mulana. No doubts, ma'am. Thank you. Dronacharya Group Gurgaon. Doubts for now. Noida. No doubts. No ma'am, no doubts. आप में से किसी को कोई डाउट? Any doubts? आप में से किसी को? Clear? Okay, so we have come to the end of this lecture. In today's lecture, we have covered the basics of Keel compiler, how to write our program in Keel, how to compile it, how to create the hex file, and then we also saw some of the programs which we discussed earlier, and we created hex file also. Then I demonstrated the ECE flash also, how to burn our hex file into the microcontroller with the help of this kit, and timers were also discussed today. The second half, Dr. Chatterjee, he is coming for taking a lecture on the speed control of motor using your microcontroller and microprocessor. Thank you. मैम आफ्टरनून का लेक्चर चैटर्जी सर का? हाँ जी, चैटर्जी सर का. ओके मैम. जैसे ये हमें 4
system programming of microcontrollers. Today we have with us Dr. Chatterjee as an expert who will be taking a class on speed control of DC motors using microprocessors. Dr. Chatterjee has a vast research as well as industrial experience of about 42 years, out of which 2 years are in industry and 40 years of teaching experience. And he retired from here as professor and head electrical engineering department. After that, Dr. Chatterjee joined as Pro VC in Desh Bhagat University, and now very soon he's going to join as VC in Sanskriti University in Mathura. So I welcome you, sir. Thank you. Shall I start from here itself? The board Yes, board use. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, I'm Vilash from MIT. Okay. How are you? I'm very fine, sir. मैं 2007 बैच का NIT पलटीआर का स्टूडेंट हूँ, सर, CSE डिपार्टमेंट का. अच्छा. Very nice. I was waiting long for your session. Okay, that's good. Thanks a lot, sir. Thank you. Okay. Well, good afternoon, all of you, the fellow participants here, and the different corners who have been with us, associated with us, these centers, and I welcome you all for this session. This session, what I am going to talk to you is about the speed control of DC shunt motor. You know, DC shunt motor. Before I start DC shunt motor, I would like to tell you something about the drives. The drives, industrial drives. The industrial drives are mainly AC drives. No doubt they are AC drives. AC motors are being used, like mostly induction motors, three-phase induction motors, and in some cases in the domestic applications, their single-phase induction motors are also used. But I cannot say that induction motors are the main drive. Of course, they are the main drives, but you cannot rule out the applications of DC drives also. Why? Because it is that 90% of the drives are AC drives, no doubt, but 10% are the DC drives. And why DC drives are important? Because one problem with the AC drives is the speed control. The speed control of AC drives is a problem. It is a difficult proportion, and it's very difficult to achieve speed control in case of AC drives. That is a big edge and advantage for a DC drive. And among DC drives, the DC series motors, DC shunt motors, etc., DC shunt motor is a unique kind of drive. Why I say it is unique? Because it can be used as a constant speed drive also. It can also be used as a variable speed drive. That's why DC shunt motors are very useful and very important drives which are used in industries. Like if you have seen a cement industry, you'll find that there is a big kiln. Have you seen? Any one of you has seen that cement industry? You have not. So if you visit a cement industry, you'll find that there's a very big kiln there in which we heat the cement material, the constituents of cement, and that is at a constant heat for a very small speed. Uniform heating is required. That's why the kiln is rotated at a very small speed, and that is obtained by DC shunt motors, and that is controlled by cycloconverters, etc., etc. So these days, I think the cycloconverter business has come into picture, which has solved to some extent the speed control of induction motors also, but still DC shunt motors are very useful. Now, thank you. When I say DC shunt motor, the most important part is that it has a very good speed. It is a very good speed controller. So it can be used as a variable speed drive.
also as a constant speed drive. This is the most important one. Now if I want to analyze the speed control, how do you control the speed? And why speed control is required? Why at all speed control is required? The basic question why speed control is required is that there are different processes in industry, and every process has got different speeds for its operation. So different processes at different speeds. So there is a very big range, lot of range, huge range you can say, of speed. That is why the speed control is required. And wherein DC shunt motor is a unique drive and it is very, very useful. Now, if you want to see how do you have the different speeds, that means how do you regulate the speed of a DC motor? What are the methods? What are the methods? No, that is a technique. Basic method is number one is voltage control and second flux control or field control. Okay. Now you have to understand when you go for a voltage control method and when you go for a flux or field control. The voltage control method is that the armature voltage, when you change the armature voltage, the speed changes. And what is the relationship between this? The speed is directly proportional to armature voltage. As you change the voltage, armature voltage, you increase the armature voltage, speed will also increase. You decrease it, it will also decrease. But here it is, flux is inversely proportional. Speed is inversely proportional to flux. That means flux is nothing but the field current. So that's why it is also known as field control method. And tell me, if I want to change the speed by flux, how can I achieve and which speed I will be able to achieve? Speed above the rated speed. Yeah, because the flux cannot be increased, it can be decreased. If you decrease flux, naturally speed will increase. So it is obvious that this method is only good, it holds good when there is an above speed, rated above speed is required. And this is what you can change the voltage to some extent, increase also, decrease also, because it is directly proportional. If you decrease the voltage, speed will decrease. If you increase the voltage, speed will increase. But it is up to the rated speed. So normally we go for this armature voltage controller. This is known as voltage control. This method is used. Okay. So let us see how you make use of armature voltage control, which is more obvious and more useful so far as the speed control of DC shunt motor is concerned. This is very limited use. Let us see. If I want to increase the voltage or if I want to decrease the voltage at the armature terminals, the armature voltage will increase or decrease. Accordingly, the speed will increase or decrease. So my objective is to change the armature voltage. Now here, the power electronics has played a very important role. And with the help of power electronics and digital electronics, the digital devices like microprocessors, microcontrollers, PLCs, PCs, etc., you can amalgamate the two methods and you can have a very good controller, speed controller or speed regulator. So if we want to use a thyristor based speed control, how do we achieve it? Let us see.
So I will talk of the thyristor bridge first. The concept is to be clear. If it is a single phase bridge, then a small DC motor can be controlled. If it a higher voltage required, then we will use a three phase bridge. So let us see a single phase bridge first. So this is the load, and these are the four diodes. I am explaining it with the help of a thyristor, not thyristor, but ordinary diode bridge first. So you understand the concept, then we go for three phase diode bridge, and then we go for thyristor bridge. If you have D1, D2, D3, and D4 like that, and a single phase supply is given like this, and across this a load is connected, you will have across this load DC output. Isn't it? Can you explain it? It's very simple. In the positive half cycle, suppose this is positive, this is negative. When this is positive with respect to this, the current will have a flow like this. This diode will be forward biased, and it will go like this. Through load, it will come like this, and from D4, it will go like this. Circuit to be completed. So, in the forward positive half cycle, I say D1 and D4 will conduct because they are the forward bias voltage. D4 finds the return path, and the load is energized D2. Load is energized like this, so current flow will be in this direction. In the reverse cycle, this becomes positive and this becomes negative. In this case, what will be this and this, D2 and D3 will be conducting. So the current will go like this, again it will go like this, load to this, add 2, 3, 3, it will go. You will find again the direction of the current is in the load is. So it is a unidirectional current. The load will have a unidirectional current, but your supply is an AC supply, and the bridge is conducting like this. So this is a single phase diode bridge. You will find that the direction of the current is same, unidirectional, and it is known as rectified DC. It is not pure DC. It is a pulsating or rectified DC. Clear? Now, and this will keep on changing because the cycles will change. This becomes positive, this becomes negative, again this becomes positive, this becomes negative, and so on. So it will keep on changing, but the bridge will conduct uniformly. But if I convert into a three-phase bridge, let us see what happens. A three-phase bridge will be like this. In three-phase 50 Hz AC, this is D1,
D4, D3, D5, D6, D2. It is numbered like this. There are 6 diodes. D1, D3, D6, D4, D5, D2. And the load will be connected like this. Here, again that pulsating or DC, rectified DC will appear. Now, how will it function? This is a different bridge altogether. It is a 3-phase bridge, but it is not an uncontrolled bridge. There is no controlling element here. The control hasn't yet come, but it is a bridge, and I will use it, convert it into thyristor bridge, and then we'll see how does it control, right? How will it function? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? Can anybody tell how will it function? Single phase, it was very simple. Diagonal diodes were conducting. If you have noticed my explanation, it was very simple that diagonal diodes were conducting at a time, and in the next half cycle, the next diode was conducting, and they are conducting simultaneously. So D1, D2 or whatever it is, D3, D4, they were conducting, and rectified or pulsating DC was available across the load, so that's why it was uniform. But here, what will happen? Can you say that D1, D5 will conduct, D1, D2 will conduct, D3, D4 will conduct, D6, D5 will conduct. Here also it is the diagonal, but how do you say which diode will conduct? For understanding this, you have to little bit understand the 3-phase system. Suppose the phases are A, B, and C. Okay, so let us draw the 3-phase diagram. You can also draw it, 3-phase diagram. Suppose this is 0, 60, 120 and 180. So this goes from 0 to, this will be 360. दूसरा वाला कहाँ से जाएगा? This is A phase. B phase will go from 120 degree apart. So it will go from 120 and it will go from 300 like this. So this is 120, this is 300 and this is 480, something like that. This is B phase. And C phase will go like how? It will go like this, 240. ऐसे जाते. You can make this diagram a little bit more clear in a graph sheet. If you draw it in a graph sheet, the thing is A, B, C. These are the 3 phases. A from 0 to 180, 360. This is from 120 to कितना जाएगा? 480. And C 242. इसमें 360 जोड़िए 500 something 600 ये आपका होना चाहिए correct. You will find that there are certain points wherein these are intersecting each other. ये इधर ऐसे जाएगा. So you have to draw this diagram very well. And it is on a graph sheet. If you draw it, it's very simple. And sir, I always get confused. There is no question of confusing. There is no question of any confusing. 0 to 360 degrees. Next, 480 degrees. Then 240 to 600 degrees. You draw it. और 3 कलर से अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो और अच्छा होगा. आप देखेंगे there are point of intersections, right?
Now these point of intersections are very important to know. What are these? If this is 60 degree, then the first point of intersection is what? It is the middle of that. So this is 30 degrees. This is nothing but 30 degrees. ये बात समझ में है? पहला आपका 0 से 60, 120, 180. तो 0 से लेके ये 60 के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है. Which are the two phases intersecting? C and A. A phase is this and C phase is this. This is C phase. So इस point पर A and C are intersecting. इस point पर क्या क्या intersect हो रहा है? B and A. और इस point पे क्या क्या intersect हो रहा है? B and C. This point should be absolutely clear. So I can say that the first point of intersection, if you see it minutely, then A phase and C phase they have the same amplitude. ये अगर आपका amplitude है, ये angle है, तो ये amplitude A का जितना है उतनी ही C की है, और दोनों positive है कि नहीं? B negative. So can you tell me which of the two phases will be operating? You cannot say A and C and B. A और C में आपको पता नहीं चल रहा है कि which is more positive. Diode का forward bias होता है. Any diode where it is more positive, and the return path is where it is more negative. So B is negative, no doubt at this point. But A and C are equally positive. So you cannot decide either A is firing or C is firing. So at this point there is no conduction. That is the point I want to establish. This is not written in any book. At this point, if you concentrate, ऐसा कर देता हूँ. If you concentrate on this point where A and C are equally positive, you cannot say whether A is conducting or C is conducting. ठीक है? तो इस समय conduction ही नहीं होगा. The bridge will not conduct. What does it mean? It means that there is a natural delay of 30 degrees. This one clear? 30 degrees के बाद conduction start होगा. तो पहला delay जो हो गया natural delay is of 30 degrees. Now 30 degrees means what? Degrees delay एक थोड़ा अजीब सा होता है. ये तो रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है. But this is always time, which may be either in degrees or in radians. And ये क्या है? Amplitude. So that means there is a relation between degree, radian and time. How much? What is the relation? Degree and radian. 180 degrees is pi. 0 to pi बोलते हैं ना? 0 to pi is nothing but 0 to 180 degrees. So pi is nothing but 180 degrees. So radian is pi. 180 is degree. So pi radian is equal to 180 degrees. Is clear? Now what is the total time of this from here to here? किसी एक phase को आप ले लीजिए, A phase को ले लीजिए. Starts from here, goes like this and comes to this 0 to 360 degrees. 0 to 360 degrees the whole cycle. And sinusoidally it is like this. Cycle is like this. And what is this? 0 to 360 degrees or 0 to 360 degrees or 0 to 2. Is it correct? Now, this is all what equal to how much? 0 to 360 is the one cycle. And one cycle is what? What is that? In 50 hertz AC supply. 1 by 50 is your time, isn't it? 50 hertz means 50 times per second. 50 times per second. So time is 1 by frequency. 1 by 50. 1 by 50 second. ये कितना बराबर हो गया? Is equal to 20 millisecond. Is it not? So 360 degrees or one cycle or 2 pi radian is nothing but equal to 20 milliseconds. So this is nothing but time. This is nothing but amplitude. And you know that at what instant
A is positive, B is positive, or C is positive, or is negative. You know it. Clear? If this is clear to you, then you can tell me that at some instant, which diode, which pair of diodes will conduct. That is, one will be positive. Excuse me, sir. Yes, please. Excuse me, sir. Sir, right side of the board is not visible, sir. Right side of the board is not Not visible. visible. Where you are making this 360 and 120-degree circle. This side. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Oh, sorry. No, All right. right. Not now. Oh, a little more. Thank you, sir. Thank you. Done, sir. It is Thank visible now. Thank you, sir. बोर्ड में थोड़ा बड़ा कीजिए इतना छोटा बोर्ड है इसमें कहाँ इट्स वेरी स्मॉल बोर्ड है should be a big one I understand your problem okay so now the point what I was trying to make you is you know by if you know this diagram and I'm again and again telling you that you have to understand it very nicely very perfectly and you draw it on a graph sheet with different colors then your fundamentals will be clear. Many people, power system people, they do not know what this is. And that's why they're getting confused. That's he saying, I'm always confused. There is no question of confusion. Now, yeah, later on, I will discuss color. Now, can you now tell me that if you give a supply like this, how does this bridge function? There are certain thumb rules. You can derive the thumb rules yourself. How? You see, there are two parts of the bridge. One is the positive or the upper half. This is positive or upper half. And this is negative or lower half. I'll explain it. Positive half of the bridge consists of the diodes D1, D3, D6. D1, D3 and D6 are the three diodes which constitute the positive or the upper half of the bridge. And D4, D5 and D2 are the three diodes which constitute the lower half, that is the negative half of the bridge. Okay? And mind it that in these terminals, this will be always positive and this will be always negative. This terminal is positive, this terminal is negative. Why? Because the current is coming from here and it is going like this. So entering point is always positive and leaving out point is always negative. It is always like this. Okay. Now if I say D1, one of the diode has to be from the upper half. The next diode, which is the negative diode, will have to be from the lower half. So one thumb rule is that the bridge will conduct by having a pair out of which one diode belongs to the upper half, the other one belongs to the lower half. This is the thumb rule number one. Second rule, can you have a bridge D1 and D4 conducting simultaneously? Or this and this, or this and this? No. Because D1 and D4 means it is coming from here and D4 is also going like this, so it's a short circuit. Short circuit means there is no voltage. Short circuit, what does it mean? There is no voltage. And once there is no voltage, there is no conduction. So D1 and D4 cannot conduct simultaneously. Similarly, D3, D5 cannot conduct simultaneously. Similarly, D6 and D2 will not conduct simultaneously. Is it okay? So two thumb rules are okay. First thumb rule, as I said, is one diode has to be from the positive half cycle. The other one to make this circuit has to be from the second half. Second thumb rule is that the vertical link diodes, these are known as vertical link diodes. D1, D4 make a vertical link, D3, D5 make a vertical link, and D6, D2 make a vertical link. They cannot conduct simultaneously. तो इसका मतलब थर्ड जो थंब रूल होगा वो आप खुद ही बता सकते हैं. What is that? If I take D1 from the first half, either D5 will conduct or D2 will conduct. It is obvious. For D1, if it is conducting, D5 or D2 will. For D3, tell me, D4 or D2. D5 will rule down. For D6, either D5 or D4. D2 will. Is this point clear to you?
So you can very clearly understand the fundamentals, how the bridge works. If you understand that, then you will be able to design it, program it, everything. So that's why I'm giving basically the diode bridge function. And now from here, if you see at 0 degrees, there is no conduction, because 0 degrees on no amplitude of A, no amplitude of B, no amplitude of C. B and C are both negative. So there is 0 degree, there is no conduction. But above that, there has to be conduction. But I said at 30 degrees, you do not know whether A is positive or C is positive. So first delay, natural delay was 30 degrees. So conduction will start only after 30 degrees. Right. Now, can you give me a conduction pattern or the conduction, what should there be, that conduction of the bridge, how will it conduct? Sequence will be, say 0 degree. Suppose I start from 0 degree. So 0 degree means next, not the starting, next. Suppose I say D1 and D5. This will 0 to 60 degree. It's not 0 degree, 0 to 60 degree. You see that one pair will conduct for 60 degrees. How many diodes are there? How many diodes are there? 6 diodes. And 360 degrees are there. So one pair will be for 60 degrees. 6 into 60 is 360. So for the whole cycle, how many pairs of diodes will be there? 6 pairs. And one pair will conduct for 60 degrees. Is it okay? One pair will conduct for 60 degree. Whole, there are how many pairs? 6. That's why it is also known as 6 pulse bridge. So 6 pulse bridge we both say. So 0 to 60 degree is one timing. Suppose I said D1 and D5. Then 60 to 120. You will find that one of these two diodes will remain in conduction. The other one will be commutated because of the position. Also clearly they think. Suppose I said D1 remains in position. So D1 is there and D5 is replaced. So D5 will be replaced by what? In this second. Since D1 is conducting, D4 cannot be there. So it will be D2. From 120 to 180 degree. Now D1 will go. D2 will remain there. तो D2 के साथ क्या आएगा? D3. Very good. Then 180 to 240. D3 will remain. D2 will go. D2 will be replaced by D3 is there. The D2 will be replaced. Cannot be replaced by D5. So D4. Then 240 to 300. D4 will remain and D6. And then last 300 to 360 degree. D6 and एक cycle complete हो गया. So again it will repeat. So देखिए D6 D5. So D5 will remain and D6 will be replaced by D5. So one cycle is completed, it will be repeated. So this is known as conduction cycle. Conduction cycle. How the bridge will conduct. Automatically it will conduct like this. There is no point of any control here, automatically. When you give a supply like this, you connect it, give a supply like this. This is one of the conduction cycles. Is it a unique cycle? It is not. Because you know when you switching, that switching time will just decide whether A is positive, B is positive, C is positive. So
it is not a unique cycle. It could be other cycles also. Can you tell me any other cycle? Suppose I'll tell you. Suppose I start with D1, not with D5, but D2. Suppose there is a switching time when D1 and D2 are conducting. Then D1 remains, D2 will be replaced by D5 and so on. Another cycle, another sequence. So similarly, suppose I start with D3, it could be either with D4 or with D2, another cycle. Suppose I start with D6, another cycle. So there is not a unique cycle. You cannot say that this is a unique cycle of conduction. There could be any cycle of conduction, and that will depend on when are you switching the load. You switch कब कर रहे हैं आप? Clear? इसको बोलते हैं conduction cycle. But this is not the only thing. This is whatever you are giving here, accordingly rectified DC is applied here. But I want a variable DC because मुझे armature voltage को क्या करना है? Control करना है, vary करना है. When I want to vary that, do I require this bridge like this? You have to replace it by a controller. So controller means the diodes will be replaced by thyristors. So I can do it like this, that these three become thyristors. They become T1, T3 and T6. But the lower range is with diodes only. What type of controller it will be? This is a semi-controller. Semi-controlled thyristor bridge. Because it is half control. Only the positive part is being controlled and the lower half is still diodes. So it is a semi-controlled bridge or a half-controlled thyristor bridge. Right? Suppose I want full control. Semi-control means only half cycle is being controlled. If I want the full cycle control, then what will I do? These will also be replaced by thyristors. So this becomes T4, this becomes T5, and this becomes T2. Is this point clear? Since if you want a very accurate controller, you want all the total cycles to be controlled, then you will go for a full control. It is known as fully controlled thyristorized bridge. So my next explanation will be based on this, right? अभी देखिए, इसके output जो है your load is here. That means in our case it is the DC shunt motor. In our case it is nothing. The load is nothing but the DC shunt motor. So I replace it by DC shunt motor. Fine. Whose speed is to be controlled? It is say rotating clockwise or whatever it is. Its speed is to be controlled and varied so that the output speed is the voltage is controlled so that the speed output is also varied. अब यहाँ पर आपको pulsating DC नहीं मिलेगा, इसके across में pulsating DC. कहाँ मिलेगा pulsating DC? Your pulsating DC will be available across the armature terminals A के बीच में आपको क्या मिलेगा? Pulsating DC, and this will cause change in speed. This will cause change in speed. Now you tell me how to achieve this. This is the base. I have told you the base, the controller, but the controller has to be given control signal. Then only it will control, otherwise it will not. So how will you achieve so that what is the sequence and all, and what kind of software you will use so that this armature voltage is changed and naturally the speed is changed accordingly. That is regulation or control. So that is our objective, and that is done with the help of either microprocessor or microcontroller or PC
or even heels. Then do it. Now think what kind of circuitry you will require to achieve this speed control. Let us see. Up till now, is it clear? Yes, sir. So the point I have to clarify is that conduction will stop only at the instant when the angle is 30 degree. In this case. Yeah. No, it will start only when zero में तो है ही नहीं ना. Zero में तो amplitude ही नहीं है. So it starts after 30 degrees. So firing pulse जो आपको देना पड़ेगा ना वो यहाँ पर कहीं आएगा. 0 to 60 के बीच में आएगा, लेकिन 0 पे नहीं आएगा. And it will be more than 30 degrees. The firing pulse आते हैं वो भी बात करूँगा. That will be more than 30 degrees. So first natural delay you have to call is there. आपको यहाँ pulse लाना पड़ेगा ना, यहाँ सब pulse लाना पड़ेगा. उसी तरीके से देंगे ना इसको जो supply देंगे, उसमें pulse देंगे, मैं pulse की drill करूँगा. pulse नहीं कर रहे, simple ये supply दे देंगे. नहीं होगा. चलेगा? नहीं चलेगा. कैसे चलेगा? एक ही स्पीड से चलेगा. एक ही स्पीड से. हाँ, वेरिएबल स्पीड तो नहीं आएगा ना. चलेगा. कोई ना कोई स्पीड से तो चलेगा. But you want to have variable speed. So you have to vary the pulse pattern, and that will affect its variation. वो मैं next अभी बता दूँगा. Okay, can I rub it now? Now, this conduction cycle I have purposely retained because of your reference. Now we will not call it conduction cycle, we will call it firing sequence. Conduction cycle था ये, या conduction sequence था, which was automatically being taken place. It was automatically happening because you didn't have to do anything. You just gave a supply, connected the 6 diodes like that, gave a supply, and the output was available. But now it is thyristors. And you have to fire the thyristors. How will you fire the thyristors? Depending on some conduction. And here it is not conduction sequence, but it is known as firing sequence. So firing sequence would be one of the firing sequence would be P1, P5. Let us take this one please. P1, P5. This is for 0 to 60 degrees. Then T1, T2 from 60 to 120 degrees. Then T3, T2 from 120 degrees to 180 degrees, then T3, T4 from 180 degrees to 240 degrees, then T6, T4 240 degrees to 300 degrees, and then T65 300 degrees to 360 degrees. This is one cycle, and then you repeat it. So T6 is again replaced by 1 and 5 units. This is the sequence. That was the conduction sequence automatically. Now how will you achieve this? You try to understand. For 60 degrees, starting from 0 to 60, you have to only conduct T1 and T5, and rest of them should not conduct. Otherwise, क्या हो जाएगा? Short circuit will take place. So you have to program it in such a way that for 60 degrees, only T1 and T5 should conduct. For next 60 degrees, T1 and T2 should conduct. That means T5 should be commutated. Then for next 60 degrees, T3 and T2 will conduct. That means T1 should commutate. Next 60 degrees, T3 and T4 conduct. That means T2 is commutated.
Next 60 degrees, T6 and T4 conduct, that means T3 is commutated, and for next 60 degrees, T6 and T5 are conducted, that means T4 is commutated. How will you achieve it? You will achieve it with the help of pulse triggering, not with the continuous signal. So here you have to generate pulse pattern. And there comes the role of a digital device, either a microprocessor or a microcontroller, PLC, whatever it is. So pulse train आपका कैसा होगा? Try to understand this. How many pulses do you require? 6 pulses. T1, T2, T3, T4, T5 and P6. And ये चलता ही रहेगा. So it is a pulse train. We can call it a pulse train, which is having 6 pulses at a time. Again 6 pulses. Again 6 continuously pulses will be generated. So let us try to understand what you are going to do. Pulse train will be like this. How many pulses are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I have made a pulse, rectangular pulse. It could have been a square pulse. It could have been a sawtooth, whatever it is. This pulse generation is easy, simple. That's why I'm talking about this pulse. Now there are two things here. What is this thing? What is this? If I call it, this is the amplitude or the magnitude of the pulse. Magnitude of pulse could be like this. It is a very small magnitude, and that is perhaps not desired. You know why pulses have a desired magnitude? That's very, very important. We'll discuss it later. And what is this? It is the pulse width. So there are two things. One is pulse magnitude, the other is pulse width. This is the magnitude and this is the width. This is very important, both. Why? Because they are thyristors. T1, T2, T3, etc. are thyristors. जब आप इसकी गेट पे पल्स देते हो, any pulse, that pulse has a definite magnitude and definite width. If you pulse width modulation इसी से आया, if you don't modulate it properly, it will not fire. And what are those things which are linked with the firing of your thyristor? Any thyristor? What are the two main values? One is the threshold voltage, all right? उसको बोलते हैं IG minimum, gate minimum current. Correspondingly, it is a current device, current control device. Thyristor is a current control device. So how much current you are giving to the gate is IG minimum to IG maximum. Now, if you have, suppose I give you an example, this IG minimum is 20 milliampere and IG maximum is say 400 milliampere. Suppose a thyristor is there whose IG minimum is 20 milliamperes
and IG maximum is 400 milliamps. What does it mean? It is the range between 20 milliamperes and 400 milliamperes the thyristor can be fired. Not beyond this, not below this. If you give a below 20 milliampere, it will not fire. If you go beyond 400 milliamperes, it will get burned. So that is the design range. So वही चीज जो है 20 milliamperes is the minimum magnitude here. So it has to be, the magnitude has to be more than or equal to 20 milliamperes. Is this point clear? Then the width. You see, first pulse is generated here, it ends here. Yeah, here to here is the first pulse. And again second pulse is generated. Yeah? So from here to here, how much is the time? अभी आपको explain किया था. First pulse generated remains and then off. ये time कितना है? It is 60 degrees. Second again 60 degree. Third again 60 degree. Fourth again 60 degree. Fifth again 60 degree. And sixth again 60 degrees. Cycle is complete. And that is the sequence. So here to here is 60 degrees. Timing is 60 degrees. Agree? And this is your pulse width. What is pulse width? Can you tell me pulse width? What is the significance of this pulse width? Means this much is the energy it retains. Width अगर कम होगा तो एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो भी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना? जितना ये ज्यादा होगा उतनी ही आपकी एनर्जी कंटेंट विल बी मोर. Is it so? So what I say is from here to here and here up to this point, this is the maximum energy it retains, and that is enough to fire the thyristor. That depends on two things. One is this and the other is width. So width को भी अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी आपका फायर होगा या नहीं. एक तो एम्पलीट्यूड का हो गया. विड्थ किससे टाइम किससे आप करेंगे? ऑन टाइम ड्यूटी साइकिल. एग्जैक्टली ड्यूटी साइकिल. So there is an on time and an off time. So if you have the duty cycle of the thyristor node, then you can say that minimum this time is required to retain that pulse so that it is fired. Otherwise it will not fire. आप जितनी मर्जी pulses देते जाओ वो हो गए फिर हट जाए. उसको बोलते हैं false triggering. That is known as false triggering. It will try to fire but it cannot fire. Is this point clear? So this width is nothing but greater than or equal to turn on time. And this amplitude is nothing but greater than or equal to Ig minimum. यही आपको डिजाइन करना है. You have to design the pulse train. Once you design it, depending on the thyristor, you get the values. What is the minimum value of gate current? What is the your on time? These days, the thyristors are available with 10 microsecond, nanosecond, microsecond timing, right? So you had designed this. आपने डिजाइन कर दिया. अब इसको आपको निकालना है. किस में डिजाइन करेंगे? That is nothing but the microcontroller और microprocessor. ठीक है? अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर में किया है और माइक्रो कंट्रोलर में भी कर सकते हैं. What is the difference between the two? Both are nothing but controllers. Processor is a controller or not? Microprocessor is a controller or not? No. You tell me. I'm saying microprocessor is a controller or not? Microcontroller is a controller, no doubt. Microprocessor is not a controller. It is a CPU. And controller is a computer. Controller is a microcontroller is a microcomputer. It has input output device. It has memory and it has also the timers. Whereas microprocessor does not have any input output device. उसके बाद तो नहीं होता है. वो कर तो देता है उसको processing कर देता है CPU, but it contains in it
उसके ऐसे आप उसमें जाओगे, ये मैं उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, accumulator. If you check, the content is there, but it is not in a position to give it out. आपको तो वहां पर गेट में लगाना है ना, गेट पर आपको ये पल्सेस देने ही नहीं तो ये फायर ही नहीं होगा. So when you need to give that pulse to the gate, the microprocessor is able to generate this pulse, but it is unable to fetch it to the gate. What will you do? क्या करेंगे आप? कौन सी डिवाइस? 8255. Very good. 8255. What is this? So 8085. Even 8-bit microprocessor will do. Yes. Plus 8255. So PPI. It is a PPI, right? Programmable peripheral interfaces. When you have microprocessor with PPI, it almost becomes a microcontroller. ठीक है ना? Timer भी अलग से होता है. But it can serve the purpose. Controller बन सकता है. So unless you have a PPI, you forget about 8085 or 8086, whatever it is, or any microprocessor. It will not be able to do. So you have to have a PPI along with this. Clear? इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पल्स को जनरेट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, either with a microprocessor or with a microcontroller. Microcontroller itself is capable of doing it as well as giving it out. But microprocessor definitely needs a PPI. Now, if you are using a micro, suppose you don't have a microcontroller, you have a microprocessor and a PPI, you can generate this, you can program it. तो उसमें आपको क्या चाहिए होगा? What you will require? You have to generate an intelligent word for that. You know that. Mode को select करके फिर intelligent word होता है. I think 90H or something like that. ऐसे होता है ना 90H, 80H. So you can 80H. So you can do that also. But in microcontroller it is simple. Assembly language देखो. Now the question is, how will you generate this? You have to write the program. Can you tell me what should be the program? Whether it is microprocessor or microcontroller, you have to write it in assembly language. What will you write? What is this actually? It is nothing but a positive edge. Then retain the positive edge for certain time, which is delay. Then produce the negative edge and again retain it for another delay. This is the program. And then repeat. Sample or hold. That's it. जानते सब कुछ है लेकिन उसको apply नहीं कर सकते आप. What is the point of reading all these things but I cannot do anything? ये तो वही हो गया ना, IPL मैच चल रहा है. Suddenly my this thing TV goes. अरे मुझे नहीं पता अगला बॉल क्या हो रहा है. 7 सेक्टर से एक टेक्नीशियन बुला के ला दे. यार चल यार मेरा टीवी ठीक कर दे. वो तो दौड़ता हुआ आएगा. He doesn't know what is Ohm's law, what is this that. कुछ नहीं जानता. And you are MTech, PhD and whatnot. You cannot do anything with the TV. He will come and do some fiddle something. It will start. कह रहा है यार 2000 रुपए दे. जल्द चाहे. And again it starts. So what is the difference between this 7 sector wala and you? You know everything, but you can't do anything. And that fellow knows nothing but can do something. So skill is very, very important. You have to have the skill in your hand, in your heart, in your mind. Then you can produce things. You can produce things. You can deliver things. Right? So now tell me, is कैसे लिखोगे program? ये बताओ. So separate the delay, then again delay. That delay we have to. How many delays you have here? First of all, tell me this. You have that pattern, 30 degrees for the first delay. Natural delay was 30 degrees. 30 degrees का delay पहले लिखो. क्योंकि अगर आपको इस टाइप से pulses बनाने हैं, यहाँ pulse नहीं बनाना, आपको pulse यहाँ से बनाना है. So this is 30 degrees. Okay. First delay 30 degrees. 30 degrees के बाद zero firing angle नहीं होगा. कोई firing angle होगा. Firing angle is also a delay. So the first delay is the natural delay, which is 30 degrees, followed by the firing angle delay. That is delay 2. Put it down. Delay 1. It is so simple. आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं. But तुमने इसको हवा बना दिया यार, न जाने क्या चीज है. आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. Do it in the laboratory. I'm telling you. First delay say D1 is 30 degrees. Delay 2
is alpha, which is firing angle delay. तो delay हो गया. So what will you say? Call delay 1, call delay 2. And delay का सब routine कहीं किसी memory location में आपको बार-बार थोड़ी लिखेंगे वो program. You will write down the delay program for 30 degrees in some memory location. Write down the firing angle delay in some memory location and call it. Right? So दो ये हो गए. उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आपका pulse. Out 0-1 hex. तो ये बनेगा ना? Out 0-1 hex. Again a delay. How much is that delay? T on. So D3 is T on. उसके बाद out 0-0 hex. And then again D4. And D4 is 60 degree minus T on. Total is 60 degree minus T on. So these are nothing but delay programs written in some memory location. And what is the main program then? What tell me the main program? Main program will start from call delay 1, note control. Call delay 1, call delay 2, out 0-1 hex, call delay 3, out 0-0 hex, and call delay 4, and then repeat. This is the main program actually. Pulse बनेगा कि नहीं? ऐसे pulse बन जाएंगे. इसको करके देख सकते हैं. You can try it. ऐसे pulses बनेंगे. Now tell me, these 60 minus this 60 degrees are much. अगर timeline इसको देखें तो कितना हो जाएगा? Tell me. 60 degrees is 120 milliamperes. 20 million is 360 degrees. क्या बात कर रहे हैं आप? 60 degrees will be 1/6 of 20 milliseconds. That is 3.3 milliseconds. तो टोटल जो है 3.3 मिलीसेकंड से आप उतना माइनस कर देंगे तो वो डिले 4 आपका. Is it correct? 400. This is okay. Now you can write down this program, but you want to have only T1 and T5 on, T1, T2 on, this on, this on, this on at a time. अगर आपने ये पल्स पैटर्न चला दिया और सब में ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो सारा भस्म हो जाएगा. Because everything will be coming. So what will you do? क्या करेंगे? You have to only program this so that for 60 degrees, only T1 and T5 should be on. Next, only T1, T2 should be on. So you have to write a control word. And the control word will be taken, if it is microprocessor plus PPI, it will be taken from the PPI. PPI से लेना और microcontroller को भी उसके controller से. Control में 8 bit है. 8 bit. 8 bit is like this. Like this. This is 0 bit. This is 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5, 6, and 7. 8 bits are there, right? Now suppose I have connected my thyristors like this. T1, T2, T3, T4, T5, T6. ये आपका bit not used. Are you getting the point? So first control word will be T1 and T5 should be on and rest all off. So आपका word क्या हो जाएगा? T1 1 हो जाएगा, T5 1 हो जाएगा and rest क्या हो जाएगा? 0. So this is the control word. We have to generate for 60 degrees this control word, for another 60 degrees next control word, and so on. जब आप ऐसा करेंगे तो पल्स पैटर्न आपका ऐसा नहीं होगा. कैसा होगा? First pulse is on, then off, fifth pulse is on. So only
T1 and T5 will be on, rest all will be off. ये चीज अगर आपको सॉफ्टवेयर से करना है, हार्डवेयर I have already told you, you write the program and supply it to the thyristor gates. It will automatically. But there is a question. After all these delays, delay program तो आप जानते हैं ना कैसे लिखते हैं? You know, count down करते हैं, ठीक है ना? And फिर ORing वगैरह करते हैं. You know, I suppose that much you know. So delay तो आपने लिख लिया. But these delays are constant. This is constant. This is constant. This is all. But this is variable. तो कैसे करेंगे? एक ही जो delay लिखेंगे. That is, you will write it for only one firing angle, say 45 degrees. तो वेरी कहाँ होगा? 45 degrees की firing angle को चलता रहेगा. वेरी कहाँ होगा? क्या करोगे? वही तो I am asking you. What will you do? Everything I am not going to tell you. You should do something of your own also. बताइए क्या करें? जनरेटर चलेगा, प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें से एक इनपुट देंगे. यार तुमने वर्ड तो इंटेलिजेंट वर्ड भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, थैरिस्टर ऑन भी हो रहा ऑफ. ओनली थिंग इज वेरी नहीं कर, तो क्या बार स्विच वो कीबोर्ड से बार-बार डिले चेंज करो? ऐसा तो नहीं करूंगा, तो ये सेम ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं. You have to generate a lookup table. Lookup table is to be generated, and the lookup table will be very, very vast, exhaustive lookup table, which will have so much of speed, so much is the firing angle, so much is the count. So much is the speed, so much is the firing angle, so much is the count. Exhaustive लिखिए, और अपना जो कंट्रोलर है उसको सिर्फ उसमें दीजिए, वो फटाफट उसको देखकर अपने आप ही फोन करेगा. Then it becomes an automatic speed. So write down an exhaustive lookup table is to be devised, depending on which the controller will generate variable speed for the decision program. The automatic controller बन गया. So software I have discussed. Hardware, what do you think hardware should consist of? एक तो thyristor bridge होगा. So there are 6 thyristors, and you have to know the specifications of the thyristors. The motor rating के ऊपर आपका thyristor specification मिलेगा. Is it not? The thyristors you have to choose as per the motor rating. Suppose the DC motor is of 3 HP or 7 HP or 10 HP. As per that, you have to choose the thyristors. And all the thyristors should be matched. ये नहीं कि किसी में SN4 604 लगा रहे हैं, किसी में कुछ लगा रहे हैं. Absolutely matched thyristors. You connect them. Now, when you generate the pulses through microprocessor or microcontroller, then there are 2 circuits. One is the control circuit, the other is the power circuit. One is the power circuit, another is the control circuit. The power circuit is what? Supply of 3-phase given to the 3-phase fully controlled thyristor switch. So it will be a 415 volt, 50 hertz AC. And what is the control circuit? It is through the microprocessor or microcontroller. It is only 5 volt DC. Is it not? And so there is hell of a lot of difference between the 2 circuits, and you are performing them at a time. You are working with both the circuits at a time. So there is a big risk of short circuiting between the 2, because the voltage levels are different, highly different. This is 415 volt AC and this is 5 volt DC. कोई तुलना ही नहीं है. Then for precautionary, what will you have? Whenever you design such a circuit,
For isolation, we Isolation. So an isolator is required. And here you can use an isolator transformer, isolation transformer, and an optocoupler. Double isolation करिए. Clear? What is an isolation transformer? 4502 वगैरह आता है. 1:1 means whatever is coming as the pulse, same is transferred. 1:1 means windings are same. Number of turns of the winding 1 and winding 2 are same. And what is an optocoupler? Optocoupler is a device which is coupling the two circuits not magnetically. It is coupling the two circuits optically. उसमें LED लगा हुआ रहता है. No. Step down transformer is not used. That is isolation transformer. 1:1 करते हैं. क्योंकि pulse अगर आप देंगे उससे तो pulse reduce हो जाएगा. That will not do. So isolation transformer has to be used. And optocoupler, as I said, there are so many optocouplers. आजकल digital optocouplers भी आते हैं. उसमें क्या होता है कि there is one LED. And a thyristor is there. Sorry, transistor is there. Yes, इसमें VCC अप्लाई कर दीजिए. इसमें से आपका लाइट जाता है. And this base is open. और इसको जो है ग्राउंड कर देता है. ग्राउंड. इसको VCC दे देते हैं. ये जो as it is जब लाइट जाता है तो ये इसके बेस में पड़ता है. So this transistor, which is a photo transistor, starts conducting. And इसके through ये पल्स को सेंड कर देते हैं. तो यहाँ पर आगे आपके सर्किट लगे हुए गेट. So this is optocoupler. So optocoupler can be used. Also isolator can be used. So double isolation because the voltage levels are very different, very highly different. तो इसमें isolation हो गया. और क्या हार्डवेयर में चाहिए? Hardware means the thyristors, 6 thyristors and some capacitors, etc., diode, etc. for the precautions. And isolation. And what else you need? What else you need? You see, आपकी सप्लाई जो है, सप्लाई के साथ आपको पल्स पैटर्न को लगाना है. You have to synchronize the pulse pattern with the supply. Whenever you switch it on, the pulse pattern should also start there itself. 30 degrees delay, etc., etc. अदरवाइज आपका पल्स यहाँ चल रहा है, आपका पल्स पैटर्न यहाँ चल रहा है, सप्लाई यहाँ चल रही है, दोनों में कोई मैच नहीं है. सो लॉट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विल बी देयर. सो यू नीड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ZCD. नहीं तो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे. लाइट LED लगाया है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर से हम पल्स ला रहे हैं वो इसमें देते हैं. तो वो आके जब हाई बनता है तो LED लाइट ग्लो करता है. लाइट ग्लो करने से ट्रांजिस्टर आपको कंडक्ट करना स्टार्ट. When it starts conducting, it is passed. The same pulse is passed. That is optocoupler. Okay. So this is control circuit, isolation, and optocoupler. ये था ना? I was talking about. Yes, zero crossing detector, ZCD. You see, suppose this is a sinusoidal wave. Now you need a pulse here, then you need a pulse here, then you need a pulse here, and so on. ठीक है ना? So इस pulse train को इस sinusoidal wave के साथ synchronize करना है. You have to synchronize so that whenever you switch on, that also is generated. Otherwise ये आगे पीछे होता है. तो इसमें क्या चाहिए कि ये जो जीरो क्रॉस कर रहा है, ये इसको अगर हमें पता हो जाए, relative to that, I will be able to generate my pulse. So zero crossing detector is the device which is used, and इसके लिए nothing but op amps are used. Op amp, when you use it as a comparator, it will compare to zero crossing. जहाँ zero आएगा वहाँ पर edge बनाएगा, फिर maintain करेगा, फिर edge बनाएगा. So it is nothing but comparator. So op amp will be required.
every phase and neutral के बीच में एक copper. So your hardware is ready. Precautionary, you have to have diodes, you have to have resistors, you have to have capacitors as per the design. You have 6 thyristors, you have 415 volt amperes AC supply, you have microprocessor or microcontroller, you may have PLC, you may have PC. PC से भी आप कर सकते हैं, PC में port लगा रहता है, उससे आप generate कर सकते हैं. And when you did and the software is ready, you can control the speed. And you can vary by changing the count. Count को change करिए ना, तो speed उसका जो वो होगा, that voltage will change. And when the voltage will change, the speed. So this is in a nutshell the speed control of a DC shunt motor. Microprocessor based, you can say, or microcontroller based, whatever you may say. I only want to tell you that this kind of project, if you take up along with your students, you are all teachers, isn't it? Teachers or students? You are a student, you are a teacher, you are a teacher. Teacher. So you can take up with your students and you can go to the laboratory and do this work. I think wonderful project. It's a wonderful project. And when you start doing it, you start it with a bulb, just ordinary lamp load. And you see it is blinking. And it is changing, variation. जैसे आप auto transformer या variac से करते हैं ना, you change the voltage, the glow changes, the intensity of the light changes. What is that? The voltage is changing. Here also, when you have different firing angles, voltage will diminish. And you will have all kinds of controllers. Now, once you are ready with this kind of thing, then you can go for dual converters. Double bridge. You have single bridge, double bridge converter, dual bridge. One is used as a rectifier, the other can be used as an inverter. So you can change the direction of the rotation. You can four mode controller. 4 mode controller होता है, वो you can divide into a dual converter. Only thing is, the thyristors should be controlled properly, they should be fired properly, and the circuitry should be absolutely full. And it depends on how good software you are. You can do it for C language, whatever language you can say. But basically, if you are using microcontroller or a microprocessor, you can do it for assembly language. Simple. And if you are going for a PC, you can use a high level. So this kind of, I think, projects will help you in designing many things. You can design a rectifier, you can design an inverter, you can design a converter, you can design a dual converter, you can design a cycle converter, all those things. Okay. So with these words, I think I would like to thank you for a patience hearing. And now, any more questions? ZCD, zero crossing detector. Yes, zero crossing detector is a device which indicates these zero crossing. Here it is 0, here it is 0, here it is 0. From 0 to positive, then 0 to negative, again 0. So they will detect this with the comparator. Actually, क्या होता है कि if you in op amp, if you give a supply like this, ये अगर आप op amp को दे देंगे ना, op amp ऐसा होता है, 2 inputs, 2 supply, output, etc. तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव एज बना देगा, and it will maintain till it. Here it is negative edge बनाएगा, it will maintain like this. Again it will remain that, and again it will. So a square pulse is made by the comparator at the output. But many times you will find that this is not happening because of noise. तो इसमें nullify करते हैं. Nullify करते हैं और 7 and 4 के बीच में वो लगा. 7 and 4 नहीं, 5 and 2 के बीच में. आपका potentiometer लगा उसको nullify कर देते हैं. Then it becomes a square. So what is it doing? It is actually sensing the 0 and producing an edge. Again it is sensing an edge 0, producing a negative edge. Like that. Again it is sensing an edge and producing an edge. So zero crossing detector. It is required to synchronize the pulse pattern with the supply. Your questions will come later. I think they will put the centers first. Okay.
MIT Meerut. From MIT Meerut. Questions here from MIT. Yes, hello. MIT Meerut. So do you have any query? Would you like to give any feedback? No, there are no questions. Thank you. Okay, okay, thank you. Dronacharya, Gurgaon. Ma'am, do you have any query? Would you like to give any feedback? Dronacharya Engineering College. Hello, sir. Hello, yes. Thank you, sir, for your valuable talk, and no doubts from our side. Thank you, Okay, sir. thank you. Thank you. Dronacharya, Greater Noida. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, thank you for sharing your knowledge on DC motors with us. Thank you, thank you. Sir, could you please share some your lecture notes on DC motors with us, because the clarity of the board wasn't very clear. I think I'll hand over some notes to Dr. Ritula, who can pass it on to you. I think that because this board is very small and I know. कुछ छोटा लिखा जाता है. Ma'am, one thing I can do is some of Chatterjee sir's lectures are there also on our website. Yeah. Already recorded one with more clarity on this topic, DC motor speed control. As I told in the morning also. So when you go to our website, NCTEL, therein you will find Dr. Chatterjee's lectures. Yeah. And this lecture must also be there. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, thank you. NIT Greater Noida. Sir, do you have any query? Would you like to give any feedback? मीनाक्षी बैठी है सर. अच्छा अच्छा अच्छा. Any doubts? अभी 2013 में. NIT. Greater Noida. NIT Greater Noida. Any doubts? Hello. Yes. In case of induction motor control, we can also use this lookup table approach. Yeah. That can be done. That can be done. Okay, but the control will be more complex in that case. That definitely, induction motor controllers are more complex, but that is nowadays it is being used like that. Phase controllers they are using. Phase controllers, frequency controllers, they are using this type of circuitries. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Gana. No doubt, ma'am. No doubts. Okay, thank you. So once again, I would like to thank Dr. Chatterjee. Yes. अच्छा आप में से किसी को है फोन? High means नहीं pulse width is a high, low नहीं है. No, is a high because the energy content is there only. उसको pulse width बोलते हैं. Yes. That is on period. On T on. Yes. Any other doubts? Okay, इनकी doubts हैं. Okay, once again, I would like to thank Dr. Chatterjee for sparing his time, valuable time, and coming here and delivering such an excellent talk. And I hope all the participants must have got enriched by this speed control of DC motor using microprocessor. And I would suggest you to please tell your students also to make projects based on this knowledge. So thanks a lot, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir, from MIT. Thank you. Thank you very much. MIT.